Good morning. Guys, today's day is always, as always, very special because so many students are always thinking, सर आपके बेस्ट स्टूडेंट्स की जॉब कैसे लगती है? सर पढ़ना एक चीज है, पढ़ने के अलावा आफ्टर लर्निंग व्हाट माय स्टूडेंट डिड, मतलब मेरे स्टूडेंट जो एक्स्ट्रा करते हैं उसकी वजह से जॉब लगती है। सर व्हाट एक्स्ट्रा दे प्रेजेंट। ओके, पढ़ना एक चीज होती है, लर्निंग इज वन थिंग, पढ़ तो सब कुछ रहे। If you are able to present, if you are able to show in front of the interviews or interviewers और कंपनी में भी, भाई प्रमोशन हाइक ऑन साइड अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट करने से मिलती है। माय फर्स्ट ऑन साइड अपॉर्चुनिटी आई गेट इट विद द हेल्प ऑफ जस्ट बेसिक प्रेजेंटेशन और आई वाज ऑन द कैमरा इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। तो गाइस आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आ जाओ यार, जिसको ऑन साइड अपॉर्चुनिटी हाइक्स प्रमोशंस लेना है आ जाओ कैमरा पे, इट विल बी ग्रेट। ओके, एंड दिस इज माय फर्स्ट थिंग, मींस मेरी फर्स्ट ऑन साइड अपॉर्चुनिटी सिर्फ स्विच ऑन कैमरा स्विच ऑन करके, प्लस आई वाज जस्ट प्रेजेंटिंग द थिंग्स इन फ्रंट ऑफ द क्लाइंट। ओके, एंड क्लाइंट टोल्ड यही बंदा हमें चाहिए ऑन साइट पर। ओके, बिकॉज ही नोज द प्रोडक्ट एंड ही वाज एबल टू एक्सप्लेन द थिंग्स। ओके, और क्लाइंट ऑन साइट क्यों बुलाता है? क्लाइंट ऑन साइट इसलिए बुलाता है कि भाई आपको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज हो। इफ यू हैव नॉलेज ऑन द प्रोडक्ट, डेफिनेटली ही यू विल एबल टू ट्रबल शूट, यू विल एबल टू गिव द आंसर्स और यू कैन हेल्प टू द क्लाइंट एज वेल। तो भाई ऑन साइट अपॉर्चुनिटी और जॉब मिलने का रीजन ही यही होता है, आप कैमरे पे आओगे, प्रेजेंट योर सेल्फ। एंड टूडेज इज ए स्टूडेंट प्रेजेंटेशन। किनकी? ये जो कैमरे पे बैठे हैं मेरे स्टूडेंट्स, ये लोग आज प्रेजेंट करेंगे। सर क्या प्रेजेंट करेंगे? ओके, चलो देखते हैं ये सब सारी चीजें। ओके, सो गाइस आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। ओके, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन एंड गाइस यू कैन सी योरसेल्फ स्ट्रीमिंग ऑन द यूट्यूब एज वेल। अगर आपको अपना ये लिंक अपने दोस्तों को देना है तो ये रहा। ओके, ये रहा। हम आइडियली सिटिंग तो जूम पर है, बट अगर आपको अपने दोस्तों को लिंक देना है दे दो। ओके, कूल। सर व्हाट एग्जैक्टली द एजेंडा? द एजेंडा इज क्विक रिवीजन। सर रिवीजन कहाँ से हो गया भाई? अच्छा गाइस, व्हेन वी हैव स्टार्टेड दिस बैच, हमने बैच कब स्टार्ट किया था? कैन यू राइट इनटू द चैट बॉक्स गाइस, व्हेन वी स्टार्टेड दिस बैच? कब किया था, कब किया था गाइस? बोलिए बोलिए, 16 अनम्यूट मार्च। करके बोल दो यार शिल्पा। हाँ 16 जी, कब मार्च। किया था हमने बैच स्टार्ट? 16th सिक्सटीन March. मार्च 16 सर। मार्च। मार्च। 16th March. 16th ऑफ मार्च, करेक्ट। यस, आज हमारे 15 डेज से ज्यादा इस बैच को हो गए हैं। ओके सर, 15 डेज में क्या प्रोग्रेस है? यस, आवर प्रोग्रेस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। दिस इज द रोड मैप, दिस इज द रोड मैप विच वी प्लान। ओके, इन दिस रोड मैप, यस, हमने फाउंडेशन क्लियर करा। सर फाउंडेशन क्यों? व्हाई फाउंडेशन? वी आर वर्किंग प्रोफेशनल। आप लोग बोलते हो ना आप लोग वर्किंग प्रोफेशनल हो। Quick line, just one line answer anyone can able to give. What is the benefit of learning this foundations? What is DevOps? What is cloud computing? What are the principles of DevOps? What is AI? How the setup of AI? हाँ जी To get इमरान, our what is basic the strong. benefit? To get our हाँ basic मोहित, क्या बोल रहे strong. हो? To get our basic strong. स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपके सिनेरियोस, सिनेरियोस लेवल आंसर्स देने के लिए इजी होगा। इमरान बोलिए, क्या बोलना चाहोगे? यस ऋषभ। Sir, it's like practically we are trying to get the information, and we are trying to work on the live making machines and everything, and this will help us for a very important in our day-to-day work in office as well. Makes sense, better What I understanding in understand. short, right? Cool, thank you. Okay, cool. Yes, I'm absolutely agree with your point. Okay, और उसके बाद हमने Linux, we learn the Linux for 6 days. Linux क्यों पढ़ी भाई? क्या फायदा Linux पढ़ के? आप ही बोल दो। What is the Yeah, benefit? क्या? at least we get some ideas because I'm the person who did not know about that Linux. So, but once we start working on AWS, we got what is the benefit of Linux, and it will 90% is used Linux and whole DevOps concept. Absolutely यार, मेरे को कुछ स्टूडेंट्स ने मालूम बोलते हैं, सर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो Linux पढ़ा के, AWS पढ़ा के। मैंने बोला भाई टाइम वेस्ट नहीं है, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इंटरव्यूज निकालने, और उसके बाद इंटरव्यू निकालना, इंटरव्यू तो निकल गया चलो मान लो, उसके बाद आईटी में सरवाइव भी तो करना है। कल Correct. ओरेकल का 20,000 ले ऑफ, राइट? भाई सरवाइव, अब चलो ठीक है, जो हो गया हो गया, नेक्स्ट जॉब भी तो चाहिए, करेक्ट? यस और नो? तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग सम स्टेप्स बैक। मैं आपके 15 दिन टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। ओके, मैं 15 दिन आपको स्ट्रॉन्ग कराता हूँ। ओके, ताकि एडब्ल्यूएस आप डायरेक्ट क्लाउड इंजीनियर की तरह ज्वाइन करो। आर यू एग्री गाइस? एवरीवन एग्री? यस और नो? डू यू फील Yes, लाइक sir. दैट? Yes. Cool. Thank you. Thanks a lot. Okay. And guys, this is what the Linux we have learned in the last 10 days. Okay. So I'm going back to my PPT and I'm coming to my PPT. And yes, this is a quick revision, which we are going to do it today. Okay. And
सर आज क्यों स्पेशल, गुड फ्राइडे, ओके छुट्टी है, थोड़ा सा अगर सेशन लंबा भी हो जाएगा तो भी एक्सेप्टेबल, ओके। यस, वी स्टार्टेड द थिंग विद द लाइनेक्स एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटी फॉर द डेवऑप्स, यस स्पेशली। और उसके बाद हम लोग जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, व्हेन योर फाउंडेशन इज स्ट्रांग, भाई आप लाइनेक्स के अंदर ऑटोमेशन कर पाओगे। तो यस, दिस इज अ सेशन, वो एक वीक बाद का प्लान है, ओके। पहले तो लाइनेक्स स्ट्रांग करते जाओ, दैट्स इट, ओके। और मैनुअली एडब्ल्यूएस के सारे सर्विसेज को समझ जाओ, या टॉप 10 सर्विसेज समझ लो, फिर उसके बाद ऑटोमेशन करने में मजा आएगा। एग्री गाइस, आर यू एग्री, यस नो एवरीवन? ओके, थैंक यू, Yes. थैंक्स अ लॉट। ओके कूल, नाउ आई एम गोइंग हियर, ओके। एंड सर, क्यों, ओके, लाइनेक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, विद द हेल्प ऑफ लाइनेक्स यू विल बी गेट और यू विल स्विच योर नॉन आईटी जॉब इनटू द आईटी, दैट्स इट, ओके। नॉन टेक से टेक्निकल बन जाओगे जस्ट बाय लर्निंग लाइनेक्स, ओके। नाउ आई एम कमिंग हियर, ओके। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ओके, सिंपल, ओके। आई वांट ऑलवेज एवरीवन टू बी ऑन द कैमरा, ओके। और ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की तारीख में, क्विकली शॉर्ट में, ओके, क्योंकि हमने लॉन्ग ऑलरेडी पढ़ लिया है, ओके। तो आई एम कमिंग हियर and I will start with my very basic thing, what exactly the operating system is. हम लोग ने 5 दिन में इस तरह से पढ़ा था, okay, but I am directly coming up into the operating system. What exactly the operating system is? Operating system is a system software which will communicate with the hardware, okay, which will communicate with the hardware. Yeah, first software or first application which is running on the system, okay, on your DOS or on your hard disk, okay, hard disk SSD, okay, as a software. But what exactly will happen, it will give the output, it will take the applications resources, it will help us to support the application resources, that's it, okay. In short, अगर हम लोग बोले ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओके, ये दिस इज ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस इज योर हार्डवेयर, ओके। तो इनके बीच में दो चीज और आती है, एक आता है कर्नल, ओके, कर्नल विच इज कनेक्टेड वेरी क्लोजली टू द हार्डवेयर, एंड अनदर इज शेल विच इज नियर टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसके बीच में होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। कर्नल हार्डली कनेक्टेड with the hardware, so it is giving the fastest response to any of the application. So kernel, इसीलिए तो लाइनेक्स को, इसीलिए लाइनेक्स इज ऑल्सो नोन एज कर्नल, ओके कूल। नाउ आई एम कमिंग हियर, वेरी सिंपल क्वेश्चन, सर व्हाट इज लाइनेक्स, इज लाइनेक्स इज ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट डू यू से, यस नो? लाइनेक्स इज ऑपरेटिंग सिस्टम, यस नो, No, बोलो। No, No, it's नो, no, kernel. sir, it's No. kernel. no, no, इसका नो, कर्नल है। No. It's नो, kernel. इट्स ए वो कर्नल। अगर आइडियली बोलने में तो आंसर इज यस, बट इफ Yes. एनीवन इज आस्किंग इनटू द इंटरव्यू, डोंट से इट्स ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके, से इट्स ए कर्नल, ओके। नाउ I would like to listen from my students, okay, about some point related to the Linux. Okay, raise your hand one by one. Okay, raise your hand, raise your hand. Okay, what is Linux? The question is, what is Linux? Go ahead, raise your hand and try to give the answer. Raise your hand. Yeah, Nagesh, what is Linux? Yeah, Linux is a kernel-based operating system. It's an open source developed by AT&T Bell Labs. So it's Correct. It is developed developed by by AT&T Lab. Okay, AT&T Labs. ये लैब में बना है, ठीक है, ओके। थोड़ा सा गलत हो गया ना, थोड़ा सा गलत हो गया, ये AT&T लैब में नहीं बना है, ओके। Linux Torvald. Unix, yeah, Linux करेक्ट, Torvald. ओके। it is समटाइम हम developed by इंटरव्यूज में Linux गलत बोलते Torvald. हैं, आपने जो आंसर दे दिया वो यूनिक्स का दे दिया है, ओके। Okay. ये इंटरव्यू में मिस्टेक मत करना, ओके, है ना, चलेगा, थोड़ी सी चलती है बट ज्यादा नहीं, ओके कूल। हाँ जी, यूनिक्स, ओके। यूनिक्स हैज बीन Okay. डेवलप्ड इनटू द एटी लैब। लाइनक्स हैज बीन डेवलप्ड इन 1991 बाय लाइनस टॉरविट्स पर्सन, ओके, ठीक है, एंड इट इज डेवलप्ड एंड मैनेज बाय द कम्युनिटी, ओके। हाँ जी, और Yeah. बोलिए, यस, And अदर it पर्सन। is It safe is and highly secure. secure and stable. रेज योर हैंड गाइस, शायद whenever you want to talk, raise your hand, guys, everyone. हाँ जी, हाँ ऋषभ। Yeah, so it is secure and stable and providing a good performance while working. Correct, correct. It is secure, stable. And why it is good performance? आप इसको क्यों good performance कह रहे हो? And because of the good performance, it is used 90% of the companies as a server. But why good performance? हाँ जी, वैभव बोलिए, नीलेश, yes. Linux is similar to Unix. It हाँ was ठीक है, one. Linux is similar to Unix, ठीक है। Linux is developed, इसका अच्छा आंसर होगा, Linux is developed from the Unix. Developed by, पहले yes, Unix आया था 1960 के अप्रोक्स, ओके, एंड फ्रॉम द आइडिया ऑफ Unix द 1991. Linux has been built. Unix 1991. was Unix is a enterprise edition, okay,
Means enterprise support we are getting it, and Linux open source freely available into the market into the 1991. ओके, बिल्कुल सेम नहीं है गाइस, आइडिया सेम है, अप्रोच सेम है, बट फ्रॉम द यूनिक्स द लाइनक्स हैज बीन डेवलप्ड. गुड, हाँ जी, और बोलिए. यस, नीलेश, सैयद, हाँ, The इमरान, बोलिए. performance is better because there is no middleware architecture. The kernel-based system directly communicates with the operating system, and डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द हार्डवेयर. ओके, yeah, तो परफॉर्मेंस वाइज इट इज बेटर. सर कैसे प्रूव करो? ओके, चलो गाइस, आई एम जस्ट ओपनिंग माय विंडोज. ये मेरा विंडोज लैपटॉप है. ओके, इन द विंडोज लैपटॉप, इन सिंपल वे आई कैन से, अभी मेरी मेमोरी कंज्यूम हो रही है 16 GB. करेक्ट? यस और नो गाइस, माय 16 GB मेमोरी इज गेटिंग कंज्यूम. 16 GB यहाँ 15.2 कंज्यूम हो रही है. बट व्हेन आई एम सीइंग माय एप्लीकेशंस, मेरी एप्लीकेशन की मेमोरी कंज्यूम हो रही है 3 GB used by Chrome, okay, and around 1 is used by Zoom, 4, total 5, 6, max 7, max to max 8. 8 is consuming by all the applications, correct? But in the real time, I am able to see 15. मतलब 15 minus 6 और 15 minus 8 कितना होता है? 15 minus 8 कितना Seven. फास्ट लिया क्या? 7 7. Seven. Okay, Seven. 7 GB. Okay, यार 15 में से 8 GB is consuming by this processes max. भाई 7 GB कहाँ जा रहा है? Where is this 7 GB is going on? 7 GB is eaten by my operating system. Guys, yes or no? 7 GB मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम ईट कर रहा है. ओके, सो 7 GB सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम कंज्यूम कर रहा है. यस, 7 GB इज कंज्यूमिंग बाय ऑपरेटिंग सिस्टम. और इन द रियल टाइम प्रोडक्शन हम 7 GB वेस्ट नहीं कर सकते ओनली फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम, करेक्ट? तो विंडोज के सर्वर आर गेटिंग यूज लेसर. डॉटनेट बेस्ड एप्लीकेशन और कुछ एप्लीकेशंस में चलता है. वी आर यूजिंग द, इवन वी आर यूजिंग द विंडोज सर्वर्स, बट 90% केसेस वी आर प्राइमरी यूजिंग द लाइनक्स, यही सेव करने के लिए. ओके, 8 GB मेमोरी इज वेरी कॉस्टली, राइट? यस और नो? आप 8 GB, 2-2 GB की 4 मशीन बनाकर भी यूज कर सकते हो. हाई परफॉर्मेंस, हाई अवेलेबिलिटी, ऑटो स्केलिंग. विंडोज में सब डिफिकल्ट हो जाएगा, करेक्ट? डिफिकल्ट हो जाएगा प्लस कॉस्टली हो जाएगा. गाइस, गेटिंग माय पॉइंट? आर यू एग्री? अरे यस, नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू. दैट्स व्हाई लाइनक्स इज गेटिंग यूज. अब उसके बाद एक और पॉइंट आता है, सर अगर ये ओपन सोर्स है, इफ इट्स ओपन सोर्स, गिव मी द रेपो. गाइस, रेपो दो मुझे. आई नीड अ रेपो फ्रॉम यू गाइस. रेपो दो. ढूंढो, गूगल पे जाओ, गो टू द गूगल. ओके, ओके, नो नीड टू रिमेम्बर. ओके, Torvalds Linux. लाइनेक्स, ओके, गिटहब, बस इतना सा सर्च मारो, लाइनेक्स गिटहब. एज सुन एज यू विल सर्च इट, लाइनेक्स गिटहब, यहाँ पे फर्स्ट टैब आ रहा है टॉरवर्डिस लाइनेक्स का. यस, हियर इट इज मेंशन. ये रहा. ओके, ओ ये तो मेरे लिए बोल रहा है, ये आपके लिए नहीं है. ओके, आई एम कमिंग हियर एंड इट इज टेलिंग कि यस, लाइनेक्स इज अवेलेबल ओपन सोर्स, पब्लिकली अवेलेबल ओवर द इंटरनेट. ओके, मतलब हियर इज द रेपो वेयर कंप्लीट कोड ऑफ लाइनेक्स अवेलेबल. Good. Okay. Now, next question. Next question. In which language this is written? कौन सी लैंग्वेज में लिखा है? C language. 90% in C, See, sir. see. Language. लैंग्वेज कैसे पता चला भाई? कैसे पता चला? How you get to know? We can see languages the under languages. Mentioned language section. section. We can see यहाँ it's पे लिखा written है by सी. सर यहाँ पे लिखा है 98% in the C language. Okay. When you will come down any of the repo, any of the application, okay, any of the open source code, come little bit down and you will get to know कि यहाँ पे लिखा होता है it is written into the 98% in the C language. Next question. How many developers has written? कितने लोगों ने कोड लिखा है? 17,953 17,900. कंट्रीब्यूटर्स. ओके, चाहे एक लाइन लिखी हो, एक फुल स्टॉप लगाया हो, हाँ, 17,000 लोगों के नाम है इसके अंदर. ओके, ओके, यस, गुड. ओके, एंड देयर इज अ कोड. अब यहाँ पे एक ट्विक आएगा या एक एडवांस लेवल लिटिल बिट थिंग. सर कोड तो अवेलेबल, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? कोड अवेलेबल, इसको क्या करें? व्हाट टू डू? चलो, एक बंदा करामती दिमाग से जस्ट थिंक कि सर कोड इज अवेलेबल पब्लिकली, व्हाट यू कैन डू नेक्स्ट? निलेश ने बोला है क्लोन. क्लोन करके क्या करोगे दोस्त? we can clone it to our We can local use machine as well. to use in local terminal. क्लोन करके लोकल चलाओगे. चलो ठीक है, ठीक है, बेसिक आंसर. और कुछ? एनीवन गाइस, कोई बेटर आंसर? सर कोई चेंजेस करके न्यू ओएस बना सकते हैं, थोड़े बहुत क्या चेंजेस. बात! भाई यसीन ने क्या बोला? सर क्लोन द कोड, डाउनलोड द कोड. थोड़ा सा अगर नॉलेज है, या आज की तारीख में तो एआई से, ओके, यू कैन कस्टमाइज द थिंग एंड यू कैन मेक ए न्यू फ्लेवर विथ योर नेम, और बेच सको तो बेचो, और अदरवाइज पब्लिकली अवेलेबल.
Guys, getting my point? Yes or no? You can customize for your client, customize for your requirements. होता है बहुत से open source tools are publicly available for customization. Yes, that is the best answer I can say. Okay, cool. यही हुआ है। और मालूम है एक और रेपोज आई है, OWESOM, awesome operating systems, GitHub. Okay, यही हुआ है, यही हुआ है। और इन दिस इफ यू विल सी हियर, ओके, ये रहे भाई ऑसम ऑपरेटिंग सिस्टम्स जिन्होंने कॉपी किया, डेवलप किया, ओके, एंड यस नए नए फ्लेवर्स बना दिए। ओके, एंड बना दिए उसमें से एक और ऐसे ही लाइनेक्स भी इसी तरह बना था। लाइनेक्स आल्सो क्रिएटेड लाइक दिस, अंडरस्टूड? ओके, तो यस Yes. ऐसे ही बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं जो भी आपके, यू इफ यू हैव स्किल्स नॉलेज आप ये सब काम भी कर सकते हैं। ओके, मैं अभी ये नहीं बोलूंगा कि यू हैव टू डू इट, बट यस यू कैन डू दैट पार्ट एज। ओके, cool, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ओके, ज्यादा थ्योरी पे टाइम नहीं करेंगे, वी विल डायरेक्टली कम इनटू द प्रैक्टिकल सेशंस। ओके, थ्योरी क्योंकि हमने पढ़ ली है पहले से। ओके, व्हाई लाइनेक्स इज पॉपुलर, दिस आर द रीजंस: फ्री, ओपन सोर्स, सिक्योर एंड हाईली स्केलेबल एंड परफॉर्मेंस वाइज, दैट्स व्हाई most of the companies are trusting on the Linux and people are learning the Linux, and adoption of the Linux is very high as compared to any other operating system. Cool. Okay. Linux versus Windows. Okay. Windows is one of the popular operating system if you have a basic knowledge of English. Okay. मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। 6 ईयर स्टूडेंट जो शायद सेकंड क्लास में होगा, ओके, सेकंड क्लास, इफ यू नो कि सर ये पापा पी लिखा है, ये ए लिखा है, ओके, और PAINT मतलब पेंट होता है, उसको पेंट ओपन करके दे दो, वो माउस से कुछ ना कुछ तो ड्रॉप कर लेगा। एक दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, बट ही कैन एबल टू डू इट। ओके, और दूसरे दिन उसको सिखा दो कि सर ये क्रॉस है, इस क्रॉस पे क्लिक करोगे तो बंद हो जाएगा। यस और नो? इफ वी लर्न फॉर 5 डेज या आप उसको फ्रीली छोड़ दोगे विद द मशीन, तो ही विल एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, क्योंकि अगर उसको बेसिक इंग्लिश आती है, 10 की जगह, चलो 6 ईयर की जगह अगर मैं 10 ईयर्स ले लेता हूँ, ओके, इफ यू नो द बेसिक इंग्लिश ही कैन एबल टू प्ले विद द लिटिल बिट इनटू द विंडोज। ओके, और मैं सच बताऊं, 10 ईयर जो ये बेसिक इंग्लिश वाला ही ना है ना, 70% ऑफ IT इंजीनियर्स को भी यही आता है। ओके, लाइक विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर के फीचर्स तो आते ही नहीं है। ओके, दैट इज अ रियलिटी, हार्श रियलिटी, बट दैट इज अ ट्रुथ। ओके, जब हम लोग लाइनेक्स सीख रहे थे ना, तब स्टूडेंट बोलते सर विंडोज में ऐसा नहीं होता है। मैंने बताया था कि विंडोज में भी सारी चीज होती है। ओके, यूजर क्रिएशन होता है, परफॉर्मेंस चेक होती है, IP एड्रेस निकाल सकते हैं, बहुत सारी चीजें, एवरीथिंग हैपन मोस्ट ऑफ द टाइम विद द हेल्प ऑफ कमांड एज वेल। ओके, कूल, कोई बात नहीं, नहीं आता विंडोज भी सीख लेंगे साथ में। ओके, बट लाइनेक्स इज कम फ्रॉम द फ्लेवर ऑफ यूनिक्स। लाइनेक्स जो आया है यूनिक्स के फ्लेवर से आया है। ओके, वन ऑफ द ओपन सोर्स मोस्ट पॉपुलर फ्रीली अवेलेबल इन द मार्केट एंड मोस्ट पॉपुलर। आई आप सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड सर क्यों पढ़ रहे हैं, 80% ऑफ द सर्वर्स आर अवेलेबल इन लाइनेक्स, तो यू हैव टू सर्वाइव इनटू द सर्वर साइड, प्ले विद द सर्वर्स, तो यू हैव टू बी अवेयर अबाउट लाइनेक्स। नो कंपैरिजन, हो गया, हमने पहले ही पढ़ लिया है सब कुछ। ओके, एंड देन आई एम कमिंग हियर मल्टीपल वेज। ओके गाइस, हमने कौन कौन से सीखे, टेल मी विच वेज वी हैव यूज्ड टिल नाउ, अभी तक हमने कितने तरीके यूज कर लिए इनमें से, बोलिए। GCP, AWS, AWS, Azure AWS, Stream, Mobile AWS, Stream, Linux tool, Image, GCP, tool, AWS और Mobile mobile stream, stream, Mobile Stream, tool, मोबाइल स्ट्रीम, and ठीक है। playground. ओके, प्लेग्राउंड Playground. ये Playground, प्लेग्राउंड हमने स्टार्ट किया था, प्ले पर ये अब थोड़ी आगे जाके स्टार्ट नहीं बंद हो करा था जाएगा सर। ये। ओके, तो प्लेग्राउंड नहीं चलेगा आगे जाके। ओके, तो मैं इसको चेंज कर दूंगा। ओके, कूल। ओके, physical हमने virtual machine. फिजिकल वर्चुअल मशीन इज पॉसिबल, बट अभी मैं आगे जाके सिखाऊंगा, वो अभी मैंने सिखाया नहीं है। ओके गाइस, द बेस्ट पार्ट, यू हैव टू बी इनटू एनी ऑफ द क्लाउड। ओके, और क्लाउड में जाके ही एक्सप्लोर करना है, दैट इज द मस्ट एंड बेस्ट ऑप्शन। ओके, सर क्यों क्लाउड में रेंट दे रहे हो? भाई क्लाउड में रेंट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हें क्लाउड इंजीनियर बनना है, लाइनक्स Yes. एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बनना है। ओके, ये जो Yes. फिजिकल मशीन वगैरह वाला करोगे ना, तो फिजिकल लाइनक्स एडमिनिस्ट्रेटर बन जाओगे, देन अगेन प्रॉब्लम सर 10 लाख से ऊपर पैकेज नहीं मिलेगा। हाँ, और अगर लाइनक्स आता होगा प्लस ये चीजें आती होंगी, तो भाई फिर तो तुम्हारे लिए मार्केट ओपन है 20 30 40 LPA का। ओके, हाँ सर क्या बोल रहे हो, बोलिए। सर मोबाइल सिस्टम से हम कैसे मतलब लिनक्स मशीन बनाते ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। ओके गाइस, दोस पीपल हु डोंट हैव द मोबाइल स्ट्रीम आल्सो टिल नाउ, ओके, मोबाइल स्ट्रीम डाउनलोड करके एक ऑप्शन होता है। ओके, आई एम गिविंग दिस लिंक। ओके, और यहाँ पे एक फ्री का, जिसके अंदर हम लोग SSH, RDP, VNC, ये सारी चीजें हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, एंड यू कैन जस्ट क्लिक ऑन डाउनलोड, जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे पोर्टेबल एडिशन यू कैन डाउनलोड, सो आई एम डायरेक्टली गिविंग दिस लिंक इनटू द चैट बॉक्स, आप डाउनलोड कर।
ओके, डाउनलोड हो जाएगा, इट विल टेक 30 सेकेंड, 1 मिनट टाइम। ओके, जैसे ही डाउनलोड होगा अनजिप करना है, और इट्स ए बाइनरी फाइल, यू जस्ट हैव टू ओपन इट। सर बाइनरी मतलब क्या होता है? जिप फाइल, ये ऐसी आपके पास एक जिप फाइल आएगी, उसको अनजिप हम्म। करना है। एज सुन एज यू विल अनजिप इट, इस टाइप का आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। ओके। ओके, ये आ गया। ओके, और यहाँ पे इसको डबल क्लिक करोगे, एज सुन एज यू विल डबल क्लिक, एक आपके पास एक टर्मिनल टाइप से ओपन होगा। ओके, टर्मिनल नहीं, एक स्क्रीन आएगी। ओके, आई गेट हम्म। दिस स्क्रीन, मेरे को ये स्क्रीन आई है। ओके सर, आपके यहाँ तो बहुत सारे दिखे। हाँ, मैं बहुत सारे सर्वर्स को कनेक्ट करता रहता हूँ, एक सर्वर अभी आपके लिए भी दे रहा हूँ। ओके, खेलने के लिए गेम, हमने एक गेम देखा था। ओके, मैं अभी उस पर कनेक्ट करूंगा, और आप कितने लेवल पे हो यू कैन चेक इट। ओके, चलो, अब यहाँ पे एक होता है, देर इज ऑप्शन कॉल स्टार्ट लोकल टर्मिनल। जैसे ही स्टार्ट लोकल टर्मिनल करोगे, भाई ये बेसिक एक लोकल टर्मिनल स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे बेसिक लाइनेक्स कमांड यू कैन एटलीस्ट प्रैक्टिस। अंडरस्टूड? ओके। ओके, है ना? या। भाई सोहेल बोल रहा है डाउनलोड नहीं हो रहा है यार, कोई जूम में उसको उठा के दे दो ना। अपने पास, आपके पास जिप फाइल होगी तो यहीं पे दे दो, जूम के अंदर ही शेयर कर दो, दैट्स इट। या व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर दो सोहेल भाई के लिए। सोहेल भाई, प्रॉब्लम सॉल्व। ओके, कूल, थैंक यू। और अब यहाँ पे व्हाट आई एम डूइंग इट, एक और होता है बैश गिट। हम लोग गिट सॉफ्टवेयर भी आगे जाके इंस्टॉल करेंगे, गिट बैश। ओके, तो हम लोग गिट बैश ओपन करके भी तो वो बेसिक काम कर सकते हैं। सर गिट बैश ओपन हो गया है इन अवर मशीन। ओके, अब यहाँ पे भी तो बेसिक लाइनेक्स कमांड कर सकते हैं। यस, यहाँ पे भी बेसिक लाइनेक्स कमांड्स वी कैन रन इट। अंडरस्टूड? कुछ, अब मैं क्या करने वाला हूँ, व्हाट आई एम डूइंग इट, सर कुछ मजेदार करते हैं। हाँ जी, कुछ मजेदार करते हैं। ओके, आई एम कमिंग हियर। क्लाउड मशीन तो हम लोग ने ब्रोज बनाते हैं, हम लोग डेली, हम लोग वी आर क्रिएटिंग। ओके, तो हम लोग क्लाउड मशीन को भी थोड़ा सा पार्क करके, बट आई वांट यू आर गोइंग टू प्रेजेंट, तो आप लोग क्लाउड मशीन बनाओ। इस हम आ रहे हैं सीधे एक विद गेम के ऊपर। किसी ने रियल में खेला है ये गेम? एनीवन प्लेड दिस गेम? किसी ने खेला है आज तक यार, कंप्यूटर गेम्स स्टेजेस? हाँ, नितेश ने खेला है। ओके नितेश, यही वाला असली वाला खेला है कि ये लाइनेक्स वाला खेला है? मैं असली वाले भी खेलता भी हूँ अभी भी, एंड ऑल्सो दिस बैंडिट ऑल्सो आई प्लेड। गुड। ओके, दोनों चीज करिए, बहुत बढ़िया। ओके, दीपिका पूछ रही है मैक में सपोर्ट होता है? हाँ, क्या कोई दिक्कत नहीं है यार, कुछ मैक इज नॉट कोई प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है। ओके गाइस, व्हाट आई वांट, मैं चाहता हूँ, मैं लिंक दे रहा हूँ आप लोग को। ओके, जस्ट पेस्ट दिस लिंक, जस्ट पेस्ट दिस लिंक इन योर मोबाइल स्ट्रीम के लोकल टर्मिनल पे, या गिटबैश पर। ओके, या अगर लाइनेक्स मैक यूजर्स हैं तो मैक यूजर आप डायरेक्टली इसको पेस्ट कर दो, दिस इज द पासवर्ड। ओके, पासवर्ड है पंडित जीरो, और यूआरएल है ये रहा। ओके, आई एम गिविंग दिस यूआरएल, इस यूआरएल पे क्लिक करो। Okay? मैं करता हूँ पहले, आई एम गिविंग इनटू द जूम चैट, मैंने जूम चैट पे भी दे दिया है। ओके, कोई बंदा बोलेगा सर मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ, कितने लोग देख रहे हैं? 3 लोग देख रहे हैं भाई, 3 लोगों को भी दे देते हैं अपन यहाँ पे। ओके, cool, मैंने यूट्यूब वालों को भी दे दिया है। ओके, नाउ आई एम कमिंग हियर। Okay, and I just copy this, and I am coming here in this link, और मैंने सिर्फ यहाँ पे पेस्ट करा। okay, और इंटर मारा। as soon as I press enter, okay, and it is asking the password, ये मेरे से पासवर्ड मांग रहा है। yes, it is asking the password। okay, यहाँ पे एक और पासवर्ड ऑप्शन आ रहा है, पासवर्ड है BANDIT 0, एंटर। ओके, जैसे ही आपने बंडित जीरो करा, कनेक्टेड भाई, आप बंडित के सर्वर में कनेक्ट हो चुके हो। इसी तरह से आप तो रियल टाइम में सर्वर्स कनेक्ट करते हो, आपका एक यूआरएल होता है, आईडी पासवर्ड होता है, एंड कनेक्ट। ये तो बेसिक तरीका है, बट इन द रियल टाइम वी आर यूजिंग द पब्लिक की एंड प्राइवेट की एज वेल। ओके, इज एवरीवन कनेक्टेड? सब लोग कनेक्ट हो गए हो? कनेक्टेड, कनेक्टेड, कनेक्टेड? यस, यस, यस। परमिशन डिनाइड बोल रहा है पब्लिक की का। यस लिखना पड़ता है भाई, यस यस लिखिए। सर, इट इज गिविंग एरर, परमिशन डिनाइड पब्लिक की। पब्लिक की वगैरह कहाँ है? यहाँ पर कोई पब्लिक की ही नहीं। ओके, आई डोंट नो सर। वैशाली इतने वो मत हो कि सर नहीं हो रहा। ओके, देखो बाकी सबका हो गया, देखो इधर। ओके, चलो अब मैं आपको सिंपल सा ट्रिक बताऊं, उसको बंद करो। ओके, आप मोबाइल स्ट्रीम या एनीथिंग कोई दूसरा यूज करो। ओके, या आप क्लाउड मशीन के अंदर जाओ एंड एग्जीक्यूट दिस यूआरएल एसएसएच वाला, दैट्स इट। आप जैसे ही एसएसएच यूआरएल करोगे, अगर आपके लैपटॉप में वैसे नहीं होता है, वैसे ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, यू कैन क्रिएट एनी ऑफ द मशीन, और उससे भी आप कनेक्ट कर सकते हो, वो भी चलेगा। ओके, पासवर्ड। सर एनीथिंग इज फाइन। सर एक्चुअली जब मैक के टर्मिनल में कर रहे हैं ना, तो वो जो भी बोल रहा है, फिर वो बोल रहा है कि जो आर जो यू भी श्योर बोल रहा यू है वांट वो टू बताना कंटिन्यू पड़ेगा। कनेक्टिंग। मैं कैसे बोलूंगा, मैं कैसे कैसे करूंगा कि क्या बोल रहा है वो? स्क्रीनशॉट भेजो। पासवर्ड सर।
नहीं नहीं सर, मैं आ गया अंदर, ऐसी बात नहीं है। वो बोल रहा था फिंगरप्रिंटिंग करनी है, क्या करना है, मैं वो पूछ हाँ रहा करेक्ट करेक्ट, उसी के लिए यस टाइप करना पड़ता है, था। हाँ यस। और वही वही पूछ रहा ओके, था सर, वही पूछ रहा था, हाँ। हाँ करेक्ट। भाई जब वेरी फर्स्ट टाइम यू आर कनेक्टिंग टू एनी ऑफ द सर्वर, ही विल गैदर दैट इंफॉर्मेशन। ओके, वो आपके मशीन की इंफॉर्मेशन बोलेगा कि हाँ यस आई वांट टू डू इट। बहुत सारे लोग पासवर्ड पूछ रहे हैं, दोस्त पासवर्ड है BANDIT 0। गाइस आई वुड लाइक टू टेक द स्क्रीनशॉट। बोलो कितने लोग कनेक्ट कर लिए, देखना है मुझे तो। सेंड अप स्क्रीनशॉट, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजो या कहीं पे भी भेजो, सेंड इट। कनेक्टेड, दिखाओ दिखाओ। सर्वेश ने बोल दिया कनेक्टेड, डन। हो जाना चाहिए यार, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। क्विक गेट सेंड द स्क्रीनशॉट। और नाउ टेल मी व्हाट्स योर लेवल। लिखो कहाँ पे आपका लेवल क्या है। व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज सकते हो अगर भेजना चाहो तो। ओके, लेवल 5, प्रिंस ने बोल दिया लेवल, नितेश ने बोल दिया 29 लेवल, ठीक है बहुत बढ़िया। सुदेश ने 4-5, निशांत 11, क्या बात है यार, आप लोगों ने क्लासरूम पे कनेक्ट कमेंट किया है। ये जूम चैट तो उड़ जाती है। ओके, हमारे पास जो क्लासरूम है उसमें देखते हैं। ओके गाइस, प्लीज अगर आप ऐसा कुछ कमेंट कर रहे हो, ओके, जो सबको दिखना चाहिए, ओके ऑलवेज, तो वी आर यूजिंग द क्लासरूम, और क्लासरूम में हमने ये प्ले द गेम। ओके, 9 लोगों ने कमेंट करे हैं यार, मजाक नहीं है। निशांत बोल रहा है 11 स्टेज पे 24-10। मैं एक बार बोलूं, मजाक में मत लेना, सीरियसली मत लेना। ओके, ये आपका पैकेज है, जिस लेवल पे आप खड़े हो रहे हो ना, जिस लेवल पे आप लेवल पे पहुंच रहे हो, दैट इज योर पैकेज। कितने लोग मेरी बात से एग्री है? कितने लोग एग्री है, कितने लोग नहीं एग्री? सर मैं एग्री एग्री, इमरान भाई एग्री है, शिल्पा एग्री है, व्हाट अबाउट अदर्स? एग्री। हाँ भाई, जो आप जहां तक आप पहुंच रहे हो ना, आपका पैकेज वहां तक पहुंचाओ सर बस। मैं लेवल That's 1 all। पे हूँ तो 1 CR कनेक्ट यार ये कंसिडर जो कर लूँ? ऐसा नहीं है, तो भाई थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, सच्चे लेवल 1 से थोड़ा आगे आना पड़ेगा। 1 CR कंसिडर कर लेते हैं सर। हाँ कर लो, 1 कर लो। ओके बट गाइस सी, आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो प्लीज, है ना, वीकेंड आ रहा है अगेन, एटलीस्ट 10 या 15 लेवल पे तो आओ, है ना। आ गए कुछ लोग, आ गए, ऐसा नहीं है कि नहीं आए, आ गए। ओके, जब जरूरत होगी मैं एक 15 मिनट्स आप लोग को इन लोगों के साथ छोड़ दूंगा, तो सबके सब 15-20 लेवल पे आ जाओगे। बट खुद से आओ तो इट विल बी हेल्पफुल, करेक्ट? यस और नो? दैट्स इट। ओके, कूल, थैंक यू। ओके, चलो अब आते हैं एक्चुअल लाइनक्स लर्निंग पे। भाई आई एम क्रिएटिंग वन मशीन, ओके, जिसके बाद मशीन क्लाउड मशीन नहीं है, तो दैट्स नॉट गुड। ओके गाइस, एवरीवन क्रिएट ए मशीन, आ जाओ। आई एम क्रिएटिंग ए मशीन, ओके, आई एम क्रिएटिंग ए गूगल क्लाउड मशीन, ओके, एंड आई एम गोइंग टू द गूगल क्लाउड। I'm going to the home of the Google Cloud. Okay. As soon as I will reach into the Google Cloud, I'm creating a machine in just 5 seconds. Okay. कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है. Okay. I'm coming to the VM instance. Everyone. Okay. Guys, everyone reach into this place. Please confirm. आप लोगों ने बुकमार्क बना लिया होगा. I given the direct link. Reached, reached, reached. Fast. Guys, fast. लिख तो दो कितने लोग हाँ यहाँ तक पहुंच गए। ओके, चलो क्रिएट ए मशीन। ओके, क्रिएट ए मशीन। आई एम क्लिकिंग ऑन क्रिएट इंस्टेंस। ओके, आई एम क्रिएटिंग लाइनेक्स रिवीजन, LINUX, लाइनेक्स REVISION। ओके, ये बात बोलना सर फास्ट हो रहा है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 15 दिन से यही कर रहे हैं। ओके, है ना, कूल। एंड नाउ आई एम कमिंग टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। आई एम टेकिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए उबंटू। एक क्वेश्चन है मेरे पास, सर उबंटू क्यों ले रहे हैं, वाई उबंटू एंड वाई LTS? बोलो कौन देगा, रेज योर हैंड एंड गिव द आंसर। वाई उबंटू, वाई LTS? मेरा कोई फेवरेट नहीं है। हाँ जी प्रिंस, वाई उबंटू वाई LTS बोलिए। Basically, LTS is for long-term support. So we get a long-term support for this particular server, and Ubuntu is used widely, and it's user-friendly for beginners as well. सब So सेम है, ऐसा कुछ नहीं है, बिगनर लेवल वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उबंटू इज it's फ्रीली popular. अवेलेबल, ओके, एंड फ्रॉम द वेरी लॉन्ग टाइम कंपनीज आर यूजिंग इट, तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, है ना, दैट्स इट। और उबंटू हैज अ GUI एंड CLI। 90%, 50-70% कंपनीज आर यूजिंग द CLI। कुछ हैं 20% GUI बेस्ड भी यूज कर रहे हैं। ओके, बट GUI के लिए 6 GB 5 GB एक्स्ट्रा रैम इज रिक्वायर्ड। ओके, तो हम लोग वो रैम बचाने के चक्कर में वी आर नॉट यूजिंग द GUI बेस्ड। ओके, cool. I'm just taking the 20 GB of size. Okay, I'm sharing my screen again. Okay, good answer, friends. Okay, 20 and LTS. I'm taking the LTS version. Long-term support. Don't take the minimal because minimal में क्या होता है? Full flash options are not available. So I will suggest you full take the LTS version. 64-bit processor of Intel. Okay, and I selected that. Okay, and networking. I just allow the traffic and I click on clear. Okay,
थोड़ा सा 10 लाख से ऊपर आते हैं हम लोग, तो आई एम जस्ट यूजिंग द इक्विवेलेंट कोड ऑप्शन। ओके, और ये मेरा पूरा कोड रेडी है, मैंने इस कोड को कॉपी कर लिया। यस, आई वांट आप लोग भी कोड को कॉपी कर लो। ओके, ये रहा CLI ऑप्शन। ये क्रिएट करना है, क्रिएट कर दो। अब आपने कोड कॉपी कर लिया, फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आपको हर बार ये कॉन्फ़िगरेशन फिल करने की जरूरत नहीं है। ओके, यू कैन कीप दिस कमांड रेडी। मैं हर बार बोलूंगा आपसे मशीन बनाने को, यू कैन कीप दिस कमांड रेडी। ओके, इस कमांड को कॉपी करो। ओके, कहीं पे भी रख लो, गिटहब पे या XYZ वेर एवर यू वांट। ओके, गो टू दैट एंड यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टर्मिनल, एक्टिवेट क्लाउड शेल। ओके, एक्टिवेट क्लाउड शेल आ रहा है सबको? And click on activate cloud shell. As soon as you will click on activate cloud shell, what will happen? Yes, one cloud shell will be get activated. Okay, I'm just authorizing it so that it will allow me to log in into the cloud shell environment. Okay, with my this account, and as soon as I will reach into the account, okay, as soon as I will reach into the account, I will just execute that command and I will get the machine. देखते हैं कैसे होता है। And guys, I want everyone, सब लोग मशीन के लिए, because now I'm handing over to you guys in the next 5 minutes। उसके बाद आप लोग को प्रेजेंट करना है। ओके, माय वर्क विल बी डन। ओके, क्योंकि हम तो लाइनें पढ़ चुके हैं, तो एक्स्ट्रा में ये तो एक्स्ट्रा है। ओके, हाँ दीपिका, मोबाइल स्ट्रीम मैक में जरूरत, आपको जरूरत ही नहीं है मोबाइल स्ट्रीम की। ओके, बिकॉज आप तो ऑलरेडी मैक में हो, आपके पास ऑलरेडी टर्मिनल है, तो आपको ये सब की जरूरत ही नहीं है। मैक आप यूजर्स बताओ ज्यादा मैं परेशान कब मत हो। मैं ट्राई कर रही हूँ कब से। नहीं करना, मैं अब शायद मैंने अपनी क्लासेस में 5 से 10 बार ये बात बोली है कि मैक को नहीं परेशान होना है, मैक के लिए कुछ नहीं करना है, आपको कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, आपके पास ऑलरेडी टर्मिनल है, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। ओके, सर कूल गाइस, आई क्वेश्चन। कनेक्टेड टू दैट। परफॉर्मेंस टाइप वहाँ पे इफ आई रन, सो ये वहाँ पे मुझे लेके जाएगा, लाइक इफ आई सिंपली। मैक चलाना आता है, मैक चलाना आता है, उसके अंदर हाँ एक हाँ, टर्मिनल होता है। ओके, नहीं नहीं, टर्मिनल में जाइए my और question डायरेक्टली ये is कमांड पेस्ट कर दीजिए बस। if I directly run this command, so whether I will be हाँ, in that, हाँ ठीक है, I'll check। नहीं, आप बस ये कमांड आपको रन करना है, तो वो एक प्रॉम्प्ट आएगा, डू यू वांट टू कनेक्ट टू द सर्वर, इट इज टेकिंग द फिंगरप्रिंट। आपको यहाँ पे लिखना है यस, YES और इंटर मार दीजिएगा, तो उसके बाद आएगा पासवर्ड, हो गया बस। ओके। सर थैंक यू। एंड गाइस, अब मैं आ रहा हूँ, आई एम जस्ट कॉपी दैट कमांड, मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ। ओके, सर कॉपीड एंड जीसीपी में आई मैं जस्ट अकाउंट बनाने जा रहा हूँ ना, तो सर वो फर्नांडिस, साइड अभी में अकाउंट नहीं, अभी नहीं, अभी फर्नांडिस हम GCP का अकाउंट अभी नहीं बना रहे हैं। ओके, हम लोग बहुत पहले बना चुके हैं, कोई बात नहीं, अगर आपका नहीं बना है, कुछ करते हैं, मैं नहीं आपको सर, कुछ। वर्चुअल सर मशीन बना। AWS में खोल सकते हैं मशीन, वो अगर बाईस नहीं हो डॉलर रहा दिखा रहा है जिसमें। मंथली, ऐसा लिखा रहा है अरे राइट हैंड साइड पे। नहीं, फ्री टायर अकाउंट है, फ्री टायर अकाउंट है दोस्त, फ्री टायर अकाउंट है, $22 एक महीने का है। ओके, हम तो 15 मिनट बाद डिलीट कर देना आप लोग, ठीक है। Cool. सर तो आई जस्ट पेस्टिंग, वेट। ओके, आई एम जस्ट पेस्टिंग दैट कमांड, मैंने कमांड को पेस्ट किया, एज सुन एज आई पेस्ट एंटर। ओके, और ये कमांड जो हमने यहाँ से जनरेट किया था, वी जनरेटेड फ्रॉम हियर एंड आई पेस्टेड, एज सुन एज आई पेस्टेड, जैसे ही मैंने पेस्ट किया है, नाउ व्हाट विल हैपन, इट विल टेक 30 सेकेंड, 1 मिनट ऑफ टाइम एंड माई मशीन विल बी रेडी विद द CLI अप्रोच। कुछ तो अलग आया है, कुछ तो एरर आ गया भाई, कुछ तो एरर आ गया। बोलो भाई, अब आपको मजा, समथिंग एरर की, बोलो आज एरर में ट्रबल शूट कर दें या ऑन करेंटली। रिसोर्स हाँ, कुछ एग्जॉस्टेड। तो आ गया, वेट, एरर भी दिख रहा है, एरर मैसेज भी दिख रहा है। क्या दिख रहा है? गाइस, रीड इट एक बार इसको पढ़ो, रीड इट। सर वो कैन व्हेनेवर द नॉट ईटू इशू चेंज अवेलेबल। केम, करना पड़ेगा वहां पर पे। यूएस बीएमएस सेंट्रल वो इज यूएस सेंट्रल में अवेलेबल नहीं है सर बीएमएस। जोन नॉट का इशू अवेलेबल। है। नहीं, वो ईटू चेंज करके कुछ और ले लेंगे तो हो जाएगा। रीजन चेंज कर देते हैं ना सर। देखो दो रीजन का ऑप्शन हो इशू गए, है या सर। तो E2 मीडियम चेंज कर दूं मैं, या लोकेशन चेंज कर दूं। करेक्ट, एग्री या करेक्ट। सुनो? यस। यस जो सर। हम लोग AWS में कर रहे थे ना गाइस, दिस इज ऑल्सो रियल टाइम। AWS में जब हम लोग ऑटो स्केलिंग का कल पढ़ रहे थे, करेक्ट, इन द ऑटो स्केलिंग आई वाज टेलिंग ए स्पॉट इंस्टेंस, अगर मेरे पास स्पॉट इंस्टेंस होता EC2 मीडियम का, तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। एग्री या सुनो? अरे You यस, नो, can try गेटिंग माय with the पॉइंट? US, like हाँ, uh, अरे वो तो मैं चेंज कर दूंगा, वो तो मैं चेंज कर Asia, दूंगा। यू वो अंडरस्टूड बेकार गाइस, यू अंडरस्टूड द RCA, यू अंडरस्टूड द RCA ऑफ द प्रॉब्लम, यस। There एवरीवन? is, what I understand is there is no space in the server in that location. हमारा उतना कुछ भी आंसर मत वेट दो। हो गया। ओके, स्टोरेज भी नहीं है नहीं, मुझे नहीं सर, हमें सुनना, गलत E2 आंसर मीडियम दे रहे नहीं हो। चाहिए। ओके, चलो, लेट मी गो बैक। ओके, नाउ व्हाट आई एम डूइंग इट, आई एम गोइंग बैक। ओके, इधर जाकर मैं यहाँ पे गया मशीन के अंदर। ओके, यहाँ पे रीजन की जगह US सेंट्रल की जगह मैंने कोई सा दूसरा ले लिया।
नॉट अवेलेबल एरिया, दैट्स इट। ओके, एक ऑप्शन ये था। सेकंड था मेरे पास मशीन का ईच टू मीडियम की जगह मैं कोई सी दूसरी मशीन ले लेता, दैट्स इट। ओके, एंड आइदर यू कैन जनरेट अ कमांड अगेन एंड रन इट, और मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करके देख रहा हूँ, तो क्रिएट पे भी मशीन, अगर एरर होगा तो इट विल गिव द एरर हियर इटसेल्फ, अदरवाइज इट विल वर्क। करेक्ट? यस और नो? गाइस अंडरस्टूड? You into the chat box, you. Perfect, thank you. Okay, now I'm coming back here. Okay, and now सर मेरा no more एक theory. क्वेश्चन है सर इससे रिलेटेड। जब आपने ये हम्म, कॉपी किया था पूरा कोड, हम्म, तो हम्म, ये यूनिवर्सली चीज ऐसे लेंगे, जब भी हमको करना होगा हम बस इंस्टेंसेस चेंज कर दिया करेंगे, लोकेशन चेंज कर दिया करेंगे और डायरेक्ट यहाँ से पुश कर दिया कर करेंगे, सकते या that- हम जाया करेंगे मैनुअली जैसे अभी आपने किया हर नहीं नहीं बार नहीं 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 के नहीं, लिए? यहाँ से सी, अभी फर्स्ट टाइम था तो मैंने यहाँ से करा। ओके, नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आप डायरेक्टली यहाँ से भी चेंज ऑन द कमांड ऑल्सो यू कैन चेंज इट, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। ठीक। ओके, तो ये जो एंड गाइस दिस लोकेशन इज, का प्रॉब्लम दिखा रहा है आपको, ये क्या सबके लिए सेम होगा? मतलब अगर मैं भी वही मशीन नहीं बनाऊं नहीं तो नहीं, मेरे हो लिए भी सेम सकता है एरर होगा? ये, हो सकता है एट दैट पर्टिकुलर सेकंड और पर्टिकुलर मिनट दैट इशू इज, दैट इशू और व्हाट, दैट मशीन वाज नॉट अवेलेबल विद इन 10 मिनट्स 5 मिनट्स, दैट मशीन में अवेलेबल इनटू दैट लोकेशन, तो आई एम एबल टू रन द कमांड अगेन एंड आई मे नॉट फेस द प्रॉब्लम। ये भी हो सकता है, क्योंकि एक स्टूडेंट बोला था सर मैंने कमांड रन किया, उसने मेरी मशीन ले ली। हो सकता है, करेक्ट, तो मशीन या मुझे आती थी। एग्री? या हो सकता है। ओके गुड। ओके, एंड दिस इज द फाइल सिस्टम ऑफ लाइनेक्स। ओके, सेम थिंग इन द विंडोज ऑल्सो, वी हैव ए फाइल सिस्टम, फाइल हायरार्की। ओके, जैसे कि विंडोज के अंदर, ओके, इन द विंडोज आई एम कमिंग हियर, इन अवर विंडोज मशीन, ओके, देयर इज अ सी ड्राइव, there is a C drive, and C drive has their own components. Sir, कौन से component? Okay, users. Okay, 90% or 99% is same. What exactly the users in Windows? यहाँ पे users की information, users desktop, init scripts of users are available here. यहाँ पे भी in the Linux also it is very same. Okay, let me see. My Linux machine is created. I'm just clicking here and I click on SSH. Who will give the answer? As soon as I will click on SSH, what all operation or activities will happen? बोलो क्या होगा? अनिल? Private key will be Port number transferred. 22 and ट्रांसफर private एसएसएच It will कीज will connect be to that generated machine. public and private key. गाइस जो हाथ ऊपर उठाए वही बोला करो तो अच्छा रहेगा। ओके, या गो इट, ऋषभ बोलिए। Yeah, so it will transfer the public key and private key to the VM. Okay, as soon as I will click on SSH, okay, my keys are getting transferred into the VM. Then authentication and authorization will happen, okay, with the users. Okay, if the keys are validated with the port number 22, we will be landed into the machine. Understood, guys, everyone? आपको ये बोलना है और इतना ही बोलना है, इतना बोलना ही पड़ेगा। Okay, make sense? है ना? Thank you. Okay, and now I run the sudo -i command. Okay, and I'm landed into the Linux machine. I'm the I'm into the home location. I'm into the home location. Earlier, I was into the home location of Vikas. Now I'm into the home location of root user. That's it. Okay. अब मैंने यहाँ पे टाइप किया cd/. As soon as I will type, root has a two major things. एक होता है root user भी कहते हैं, और this slash is a root location as well. मैंने enter मारा. Okay. Now from my home location I change into the root location. Correct, guys? Yes or no? राइट, नाउ इफ आई टाइप ls मतलब होता है लॉन्ग लिस्ट। अब आपको बहुत आसान लग रही होगी क्योंकि आप तो पढ़ के आए हो। ओके, ls, एंड यस दिस इज द फाइल हायरार्की ऑफ माय लाइनक्स। ओके, जो हमने डीपली ऑलरेडी हमने अपनी क्लासेस में पढ़ी थी। ओके, ये रही, आई एम कमिंग इनटू दैट प्लेस। दिस इज व्हाट वी हैव लर्न इन द नेक्स्ट, इन द लास्ट, मींस ऑन दैट डे, द डे 2 ऑफ लाइनक्स। हमने यहाँ पे 30 से 40 मिनट स्पेंड करे थे, आज नहीं कल। ओके, दिस इज द फाइल हायरार्की जो हमने पहले पढ़ चुके। if you want to see in a deeper way, okay, मैं चाहूंगा you can take the screenshot of this, सिर्फ इसका screenshot लेके रख लो। okay, है ना? And whenever you have a time, just in some points को 2 minutes or 5 minutes just read it. Is that okay? Is that okay? जब भी आपके पास time, just read it. Now, the core of the Linux will be start. Okay, commands. Okay, some basic command. Okay, मेरे पास वही same चीज है, basic commands. Okay, थोड़े से Linux administrator commands. Okay, day to day Linux commands. Okay, regular commands. Okay, उसके बाद आएंगे user administrator commands, system admin commands, monitoring commands. Okay, and their operations.
उसके बाद आएंगे कुछ यूजर एक्सेप्टेंस रिलेटेड कमांड्स जो आपकी यूएम टीम करती है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे नेटवर्किंग कमांड्स। और आई नो जो मैंने पढ़ाया है मेरे अलावा सम स्टूडेंट्स फाइंड समथिंग अनदर थिंग जो मैंने नहीं पढ़ाया, तो दैट माय स्टूडेंट्स आर गोइंग टू प्रेजेंट। ओके, हमने कीजन भी करा था। कीजन, यस, हमने कीजन जनरेट करी थी। कीज जनरेट करी थी एंड देन वी मूव्ड ओवर की, इनके कॉन्सेप्ट भी पढ़े थे। ओके, प्लस अभी हमने जैसे ये, या आई टोल्ड कि हम लोग एक मशीन कनेक्ट करेंगे इसे। अभी जो एसएसएच कमांड है इनडायरेक्टली ये भी एक एसएसएच, एक पंडित, एक यूजर है। चलो इस कमांड को मैं समझाता हूँ, ओके, विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मेरी जगह कौन समझाएगा? हु विल एक्सप्लेन? बोलो कौन समझाएगा इस कमांड को? हु विल एक्सप्लेन? हाँ जी भाई, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। सारंग, प्रिंस। हाँ जी, सारंग, प्रिंस, बोलो कोई भी एक बंदा। शिल्पा को चांस दे क्या? शिल्पा को दे क्या? पहले कोई गर्ल आ रही है। हाँ शिल्पा जी बोलिए। शिल्पा, इफ पॉसिबल प्लीज एक्सप्लेन। Okay, SSH, it is a connect to a Linux machine, and bandit it is a username, and at the rate it is a I URL of that virtual machine, and P it is the होस्ट नेम, exposing port number होस्ट of नेम ऑफ द, होस्ट post नेम ऑफ द post मशीन। name is करेक्ट, ठीक है, हाँ। yes, और इसके and बाद hyphen P it is a giving port number to that server. करेक्ट हो गया बस। एसएसएस इज फॉर कनेक्टिविटी। ओके, हम लोग सिक्योर सेल से कनेक्ट कर रहे हैं तो एसएसएस लिखा है। बंडित जीरो इज द यूजर। ओके, ये यूजर नेम है। ये सर्वर एट द रेट के बाद जो भी लिखा है, हमें किसी भी मशीन को कनेक्ट करने के लिए एट द रेट बीच में लगाना होता है। ओके, उसके बाद दिस इज द होस्ट नेम ऑफ माय मशीन। ओके, हाइफन बी और 2020 इज द पोर्ट फ्रॉम वेयर दैट आई वेंट इनसाइड इट। ठीक है, अब मेरे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है। यार ये जो सर्वर आपने पंडित का सर्वर कनेक्ट किया था, लेट मी नो इसका इसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे नहीं पता। आई वांट यू टू फाइंड आउट एंड गिव इट टू मी। ओके, बोलो, कमांड रन करो एंड गिव मी द स्क्रीनशॉट्स प्लीज। मुझे भी नहीं पता, कमांड चाहिए। आई वांट यू टू रन द कमांड। कृष्णा, वेरी रॉन्ग आंसर, डी कमांड नहीं होता है। ओके गाइस, माय क्वेश्चन इज, मेरे को ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस रिलेटेड डिटेल्स चाहिए मुझे इसकी। मुझे कमांड नहीं चाहिए, मुझे तो स्क्रीनशॉट चाहिए। कमांड नहीं चाहिए मुझे, कमांड नहीं चाहिए मुझे, तो स्क्रीनशॉट चाहिए। रन करिए और स्क्रीनशॉट दीजिए। आई वुड लाइक टू सी द स्क्रीनशॉट्स। देखते हैं किसके आते हैं। ओके, ठीक है, कुछ तो कनेक्ट हो गया है। ठीक है, इस मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए। आई नीड अ स्क्रीनशॉट। नितेश भाई ने कुछ भेजा है व्हाट्सएप के अंदर। नितेश ने, हाँ जी, नितेश ने कमांड रन किया है, होस्टनेम सीटीएल। ये कुछ गेट सम, इसका स्टैटिक होस्टनेम है। कंप्यूटर वीएन है, वीएन है, ठीक है, ये तो वीएन पे चल रहा है। और भाई क्या बात है, ये भी तो अमेजोन की EC2, अमेजोन का उबंटू मशीन है, 24.4 LTS वर्जन जो हम पढ़ रहे हैं वही मशीन है। करेक्ट, यस और नो? वट एवर वी आर डेवलपिंग इन एवरी क्लास, दैट द सेम मशीन। अरे यस नो गाइस, एग्री? Yes, sir. ग्रेट ग्रेट, ओके, थैंक यू, यस दिस इंफॉर्मेशन इज इनफ। ओके, चलिए अब इसी सर्वर का रन 5 मॉनिटरिंग कमांड्स एंड सेंड द स्क्रीनशॉट। 5 मॉनिटरिंग कमांड्स रन करके स्क्रीनशॉट दो। 5 मॉनिटरिंग कमांड्स इसी सर्वर में। एक जना अनम्यूट करके बोलेगा व्हाट आर द 5 मॉनिटरिंग कमांड्स? एनीवन जिसके पास भी मॉनिटरिंग कमांड प्रेजेंट करने वाला बंदा है? नेट वैशाली, स्टार्ट। आप करना चाहोगे? मोहित Yes, कर sir. रहा है? हाँ जी, Sir, बोलिए। the one command is who. It will let the person like who is working on that particular machine. And second command is free minus h. It is provide the space, like what are the space we are getting in the hard drive. And यार फ्री, वेट, गलत हो गया, गलत आंसर मत दो, गलत आंसर मत दो। फ्री मतलब क्या होता है गाइस? मोहित ने क्या गलती करी? सर फ्री फ्री का हाइफन एच मेमोरी हाइफन एम का चेक मतलब करने के मेमोरी लिए होता होता है। है सर। और memory. ह्यूमन ये रीडेबल फ्री है माइनस ठीक है, एम मेमोरी। मेमोरी। ठीक है, फ्री मेमोरी मेमोरी कमांड। ह्यूमन ह्यूमन मेमोरी। रीडेबल फॉर्मेट। ओके, सर एक Okay. अब कमांड मालूम है जो क्या होता है गाइस? यू अंडरस्टूड? आप इंटरव्यू में तो बोल के आ जाते हो, करेक्ट? इंटरव्यू बोल देता हाँ ठीक है, HR विल नॉट गेट बैक टू यू, करेक्ट? यस और नो? समझ में आया? Got it, sir. डोंट थिंक कि आप रिजेक्ट किसी बड़े रीजन से हो रहे हो। ओके, आप रिजेक्ट छोटे से रीजन से होते हो। रॉन्ग आंसर। गाइस सर अंडरस्टूड? दिस इज अ लर्निंग। ओके,
अंडरस्टूड, ठीक है। थर्ड कमांड यस। मोहित यू बोलिए। नेम। यूनेम क्या होता है यूनेम से? यू नेम से सर लाइक अब मोहित बहुत टेंशन में, गलत बोला तो 40 लोग बोल, 20-30 लोग बोल देंगे कि तो विकास तो फिर बोलेंगे गलत है। अब टेंशन शुरू होगी। हाँ बोलिए। UREM, sir, still it is telling like who is the person is working. I mean, it is similar to that. मैं accurate answer नहीं दूंगा सर. And यूनेम हाइफन आप रन करोगे तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम यू विल गेट इट, ठीक है। और अगली कमांड DU डीयू, हाँ जी, व्हाट इज हैपन and विद द डीयू? DF व्हाट minus विल हैपन विद द डीयू? डीयू से क्या होगा? डिस्क के बारे में पता लगेगा. disk usage. डिस्क. करंट लोकेशन, current Current location, okay? usage. हाँ, करेक्ट Wherever you लोकेशन. will run the du command, it will give the current location usage, ठीक है। उसके सर बाद एक अगला क्वेश्चन था लास्ट, DF इसमें। minus H. एक संजय नहीं एक नहीं, मिनट, लास्ट इंटरव्यू करंट। क्वेश्चन है सर, डीयू पे एक मैंने देखा था। डीयू बोलो, और डीएफ का डिफरेंस, हु इज स्लोअर एंड हु इज ठीक है, फास्टर एंड मोहित व्हाई? बता देगा, मोहित बता देगा। मोहित को डीयू डीएफ, अगला मोहित का डीएफ ही था, मोहित बोलने वाला था। हाँ जी बोलो, डीयू डीएफ DF minus का H. डिफरेंस। हाँ, डीएफ हाइफन एच क्या होता है, डिफरेंस बोलो। डिफरेंस में सर ये पता लगता है कि मतलब जो स्प्लिटेड आई मीन उसकी हार्ड ड्राइव के बारे में आप टेंशन करिए मोहित। यार see, यही तो सी, दिस इज व्हाट वी वांट, करेक्ट? ओके. यस यस और नो? ये डिस्क एक्यूरेसी। इंफॉर्मेशन होती है, उसमें ह्यूमंस के लिए होती है। पहले अगर डीएफ जी करते हाइफन जी करते हैं तो उसमें जीबी में आते हैं, डीएफ हाइफन एम करते हैं तो एमबी में आती है। हाँ, अभिषेक का टीवी भी में आंसर बोल बिल्कुल राइट. एक्यूरेट नहीं हो रहा है। राइट हाँ राइट अभिषेक राइट. इट मेरा इज ऑल्सो क्वेश्चन नॉट है, वेरी। नहीं इंटरव्यू गाइस गाइस क्वेश्चन गाइस, है, डिफरेंस बिटवीन डीयू एंड डीएफ व्हिच इज फास्टर एंड। करेक्ट, ओके। नहीं, विच इज फास्टर तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। एक चीज, गाइस रेज योर हैंड। हाँ प्रिंस बोलो। गाइस आई एम अलाउइंग यू वन बाय वन, ओके। प्रिंस, वैशाली, हिमांशु, विवेक, हाँ जी बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हो? डीयू क्वेश्चन है, डीयू हाइफन डीयू वर्सेस डीएफ। Sir, रन करके देख लो basically, ना। गाइस एक बात बोलूं, ट्रिक, नो नीड टू वरी यार, इतना ज्यादा दिमाग मत लगाओ कि आपको थ्योरी याद होनी चाहिए। आप तो कमांड रन करके देखो, आपके पास मशीन है ना, रन इट एंड देन रेज योर हैंड एंड गिव द आंसर, सिंपल सी बात है। हाँ प्रिंस बोलो, क्या बोल रहे हो? सर बेसिकली डिस्क डीएफ का मतलब होता है डिस्क फ्री। ये आउटपुट देता है टोटल डिस्क की जो यूज स्पेस होती है, जो फ्री स्पेस होती है। और जो ये डीयू है डिस्क की वो डिस्क। इंफॉर्मेशन, अरे वेट मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। ये डिस्क की इंफॉर्मेशन था और ये माउंटिंग पॉइंट्स की इंफॉर्मेशन भी देता है, ओके। आपकी कौन सी डिस्क कनेक्टेड है, रूट ड्राइव और ये सब जितनी भी डिस्क कनेक्टेड है डीएफ से, उसकी इंफॉर्मेशन आएगी। और डीयू से क्या आएगा प्रिंस? डीयू से सर बेसिकली साइज आता है ईच पोर्ट और फाइल का। करंट तो लोकेशन का जो आ जाएगा, करंट लोकेशन का यूजेस आ जाएगा। अंडरस्टूड है ना? और कौन सा फास्टर है, देखो फास्टर का तो ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं, ओके। बट ऐसा कुछ नहीं कह सकते, अगर डीयू में करंट ज्यादा बहुत सारी फाइल्स हैं तो इट में टेक ए टाइम, ओके। तो फास्टर का कोई ऐसा आंसर नहीं होता है ना? कूल, थैंक यू। चलो नाउ गाइस व्हाट वी आर डूइंग इट, हम लोग आते हैं स्टूडेंट प्रेजेंटेशन पे, जो हमारा आज का मेन मकसद है, ओके। फॉर दैट गाइस व्हाट आई डिड, मैंने आप लोग को एक फॉर्म दिया है, आई गिवन दिस फॉर्म, ओके। फिल दिस फॉर्म प्लीज, ओके, सो दैट आई विल गेट योर नेम्स, ओके। मैं आपके नाम्स मुझे पता चल जाएंगे। और आई नो कि हाँ, कम से कम 5 से 6 स्टूडेंट्स हैं जो प्रेजेंट करना चाहते हैं, वेल एंड गुड, ओके। तो उनके फॉर्म्स में नाम्स ऑलरेडी नहीं यार, 5-7 नहीं है तो वोट नहीं करा, पर 14 स्टूडेंट्स हैं, दे वांट टू प्रेजेंट, ओके। सो आई वुड लाइक टू टेक फ्रॉम दिस लिस्ट, ये जो आपने फॉर्म भरे हैं, ओके। फर्स्ट, ओके, मैं बेसिक इंट्रोडक्शन से ले रहा हूँ। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन आपके क्या कमांड्स हैं, यू वांट टू प्रेजेंट, यू आर हियर। हर्ष आप यहाँ पे हो? हर्ष 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 हर्ष, हर्ष भाई यहाँ पे हो? चलो हर्ष नहीं है, ओके। इमरान, इमरान आप यहाँ पे हो? इमरान यू आर हियर? Yes, sir. ओके इमरान, आई एम गिविंग अ फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू यू, ओके। पर किल कर दोगे आप सबसे पहले? नहीं छोड़ो, अभी थोड़ा सा रुकते हैं, ओके। किल के अलावा और कोई? चलो, प्रशांत कुमार, प्रशांत यू आर हियर, आप यहाँ पे हो? प्रशांत, डू यू वांट टू प्रेजेंट? प्रशांत प्रशांत प्रशांत, मैं यहाँ पे एब्सेंट लगाऊंगा लगता है, नाम तो भर दिया, बोल नहीं रहे। सर मैं, यार डरो मत, हेलो, आ जाओ। मैं हर्षवर्धन हूँ बट, अपसेंट, हाँ। सर मैं हूँ बट आई विल बी एज अ ऑडियंस, वो मैंने वोट डाला था। अच्छा, ऑडियंस का वोट डाला था यार। यस। अच्छा ये बताओ, ऑडियंस बन के क्या फायदा है ये बताओ, ऑडियंस बन के क्या फायदा है ये बताओ। देखोगे कि भाई प्रिंस का 25 लाख का पैकेज लग गया है, नागेश भाई 20 लाख पे पहुंच गए हैं, सारंग 40 लाख पे पहुंच गया है, राइट? देख के क्या फायदा? वो तो हम रोती देख रहे हैं मार्केट में, करेक्ट।
हमें कर लेना है। ओके चलो कोई दिक्कत नहीं, कूल। उसके बाद आई विल पिक, थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा नागेश का। ओके और कुछ चलो, हाँ ये वाले योगिता, वैशाली, आप लोग हो गाइस अवेलेबल? योगिता, वैशाली, रियल टाइम यूज केसेस। सूरज, कौन अवेलेबल है? सूरज यू आर अवेलेबल? सूरज, सूरज, सूरज आप यहाँ पे हो? सूरज भी अवेलेबल नहीं है, अरे यार। ओके ओके कोई दिक्कत नहीं। संजीव, यू आर हियर? संजीव इज हियर। ओके संजीव, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। ओके एंड संजीव, डू हैव अ मशीन? आपके पास मशीन है? थोड़ा कैमरा सर सेटअप करो। मशीन नहीं है, बट मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ सर। थ्योरी? अरे हाँ जी। अलाइनमेंट की थ्योरी करने में क्या मजा है? एक्चुअली सर वो हो नहीं पाई थी, मेरा मतलब करप्ट हो अरे गया था पंडित सिस्टम मशीन के सर। अंदर कनेक्ट, पंडित मशीन के अंदर कनेक्ट करके रन करो ना। सर मैं वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ सर। चलो ठीक है हाँ गाइस, जी। बट दिस इज नॉट अ गुड आंसर, थ्योरी के लिए मजा नहीं आएगा। संजीव अपना कैमरा भी सेट करो प्रॉपर्ली, कैमरा सेट करो प्रॉपर्ली। ओके इंटरव्यू के लिए दैट्स रियली रिक्वायर्ड। ओके कूल, ठीक है। संजीव ओवर टू यू। ओके हाँ जी बोलिए संजीव, व्हाट इज योर थिंग? आपके पास 5-6 कमांड्स यू वांट टू टीच इट, हाँ जी बोलिए, कैसे कहना चाहते हो सबको? सर फर्स्टली मैं ग्रैप के बारे में बताना चाहूँगा। हमें मतलब कोई भी एरर फाइंड करना है, जैसे कि एरर आ रहा है कुछ भी, तो हम ग्रैप यूज़ करेंगे, लाइक ग्रैप एंड एरर एंड देन लोकेशन। सो उसमें जितने भी एरर होंगे वो आ जाएंगे सर, उसमें मतलब एक प्रॉपर पैटर्न चल रहा है तो वो भी हमें शो हो जाएगा। ठीक सो है। दिस इज ग्रैप एंड Step is for searching the pattern. Okay? यस सर। ओके आगे बोलिए। नेक्स्ट। हेड और टेल में बताना चाह रहा था, बट वो एक ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। मीन्स हमें कुछ भी अपर 10 लाइन 15 लाइन अगर सर्च करनी तो हम हेड से कर सकते हैं, और लोअर 10 और 15 लाइन करनी तो टेल से। और हम दोनों कमांड का पाइप यूज करके मिडल की लाइंस भी, हम मतलब मिडल में भी कुछ सर्च करना है तो हम यूज वो सर्च कर सकते ठीक है ओके। हैं। नेक्स्ट, हमें अगर मान लो कोई प्रोसेस चल रही है, लाइक हम वो PS-EF से प्रोसेस, रनिंग प्रोसेस सर्च निकाल सकते हैं। और अगर मान लो उनमें लाइक PS-EF किया, रनिंग प्रोसेस आ जाएंगी। तो उसके बाद में अगर उसमें कोई एरर फाइंड करना है रनिंग प्रोसेस, देन हम पाइप, देन ग्रैप एंड देन लाइक मेरे को SFTP से रिलेटेड कुछ भी पता करना है, देन फिर ग्रैप SFTP एंड देन मीन्स कई बार ये रिकवरी फाइल्स हैं, उनको हमें डिलीट किल करना होता है। जो Be little bit in English ना, ओके थोड़ा ओके सा इंग्लिश में आ जाओ ना, है ना? It will be helpful for you for interviews as well. Yes, yes. Sometime we get alert of high disk usage, then we get alert of free space, then we use df-kh, and after that we put that location, and we can find out that on which location usage is high. Means there are some criteria like above 80%, 90%, then we have to remove that space. So we have to uh, find some files using find command. Find slash hyphen, means on basis of name, basis of size, and basis of time, and then we can delete those files. Like we can delete uh, 30 plus days files, and then if we have permission to delete the files of older than 30 days, then we can use rm-rf. And Okay. Guys, see, good. Okay. But Sanjeev, I want the practicals. Guys, मुझे आप लोग चाहो कि आप demonstrate करो. That will be helpful. Understood? sure. Yes or no? So next, guys, who want to demonstrate? आप सीधे खुद ही बोल दो सर मैं demonstrate करता हूँ 5-6 commands. Who will सर ऑफिस demonstrate? जाना है तो पहले हम कर सकते हैं ऑफिस जाने हाँ वाले। हाँ कर सकते हो, ठीक है चलो। प्रिंस भाई को ऑफिस जाना है, तो प्रिंस प्रिंस यू कैन शेयर स्क्रीन। ओके और ओके करो डेमोस्ट्रेट। ओके श्योर सर। क्योंकि डेमोस्ट्रेशन में मजा आएगा यार, तभी तो इंटरव्यू निकलेगा। हाँ जी गुड। ओके लेट मी नो वंस माय स्क्रीन इज विजिबल। वी आर एबल टू सी योर स्क्रीन, यस प्रिंस। ओके सो सर माय मशीन इज रेडी, एवरीथिंग इज रेडी। आई विल go to कौन commands सी मशीन quickly. है ये? कौन सी मशीन है ये? विंडो This is Ubuntu. AWS This की, is GCP? AWS. AWS की मशीन है, ठीक है यस गुड। हाँ जी So, sir, I have written my commands here and with चलेगा, some explanation. So, first of ठीक all, है। I have the VM stat, which shows us the all the details related to VM.
So I will run one command quickly and then I will show. So if I Correct. run vmstat, it will show us the running processes currently two, and the memory which is free, the cache we have, and the input output, and other things. Like I have also written, like we need to focus only on these things in day-to-day time. Rest we can ignore based on our monitoring command. So this is free. Free is for free memory, W is for input output wait, and this US and SY is for the CPU usage. So like that we can check. And another, my next command is free hyphen L, which we normally use to check the memory of our services or servers which are running. So if I do in this way, it's not like a good practice. It's not in a humor readable format. So if I do with the H, it will show me in MBs, which is a good readable uh, format, right? So we can see the total memory is 911 MB. Out of that, this much is used and this much is free. So we have available, still we have available memory in our server. So, and then another command is stop, which shows us the process which is currently running. So we can, with this command, we can see which process is taking much memory and time, and we can see with the PID, every process has a PID associated with it, and with that PID we can check. And if we want it in a more good way, then we can use htop command. It's kind of a GUI in Linux, so it looks more sorted uh, to see the processes and everything. Makes sense. Good. And then after that we have the uptime. Uptime basically helps when we do some server rebooting after patching. Also, it's very useful to see like when the server rebooted. Like my machine was rebooted 51 minutes ago when I created this. So it's running still from 51 minutes. This is showing. So like uptime is very useful command. If server is not like rebooted from months, years, even we can see from months also some servers are running. So we can see that with the uptime command. And then we have the ping command. Ping command is basically to check the connectivity. If I do a ping, suppose www.google.com, simple one. So it will receive data in the forms of packets. So if we are receiving this data, that means the connectivity is fine. If we see some request timeout or something like that, that means the connectivity is not happening from our machine to this particular URL. So we can see this 15 packet transmitted. That means we received this much basically, and no packet was lost. So that means the connectivity is fine to this particular URL. Right. Nice. Is anyone has any question with Prince on this core commands? This पर Prince expert है हमारा. हाँ जी. You can raise your hand. You can ask the question with Prince. अच्छा guys, how was the presentation with Prince? Prince ने कैसा present किया? ये बताओ. Yeah, it's good. It's good. Good. Do you feel like कि ऐसा आपका भी होना चाहिए? Yes or no? Yes, sir. I'm quickly sharing my screen after this. ये बात अब माहौल शुरू होगा. ठीक है. अब माहौल देखो यार सी एक बार एक बेंचमार्क सेट होना चाहिए. करेक्ट guys? Yes, Prince, very good. Okay, keep it up. अब यही प्रेजेंटेशन आपको डॉकर कुबरनेटिस एनसिबल टेराफॉर्म ठीक है मतलब श्योर ये श्योर रुकना सर। नहीं है. दिस इज जस्ट अ स्टार्ट. गाइस अंडरस्टूड? सर आपने 5 कमांड्स बोला था तो मैंने 5 ही लिखा, वरना मैं अरे 11 भी हाँ ऐड कर ठीक है. सकता था। हाँ हाँ ठीक है. देखो दूसरों को भी तो मौका देना. हाँ ओके जी, बट मैंने इसलिए। बोला था 5 न्यू कमांड जो मैंने नहीं सिखाया. आपने तो ये मेरे वाले ओके। कमांड था दिए सारे. ओके ओके, आई नेक्स्ट गाइस टाइम। अंडरस्टूड है ना. चलो कूल. किसको ऑफिस जाना है? हु हैज ए ऑफिस? किसको ऑफिस जाना है उसको मैं पहले चांस दे देता हूँ. यासीन ऑफिस जाना है? ऋषभ जाना है? ऋषभ हाँ या ना बोलो फास्ट यार. मतलब घर से ही है, लेकिन या 9:30 लॉगिन है। लॉगिन है. चलो ठीक है. ऋषभ भाई शेयर योर स्क्रीन. ओके थोड़ा सा ऑफिस वालों को पहले कर लेते हैं फिर अपन तो अपने पास तो छुट्टी है. मेरी भी छुट्टी है आज तो. हाँ ऋषभ यू कैन शेयर योर स्क्रीन. ओके कूल. Okay, so I will take just basic commands as I am new to ये Linux. आराम से ऋषभ भाई आराम से. पहले कहाँ कनेक्ट किया है क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे सर ये क्या है WSL क्या है. थोड़ा सा हिंट दो. Okay, so this is my local MOBEX term, and it's a terminal. We can use the Linux from here. And guys if in the windows अब मैं थोड़ा अच्छे से बता. In the windows if you want to run the Linux okay
तो हम लोग एक WSL का सर्वर, आप लोग सर्च कर सकते हो WSL इन द विंडोज, WSL फॉर विंडोज, तो यू विल गेट वन सॉफ्टवेयर, 700 MB का कोई सॉफ्टवेयर है, यू कैन इंस्टॉल इट एज सून एज यू विल इंस्टॉल। आप उसको कनेक्ट कर सकते हो एज ए लाइनेक्स मशीन, मतलब आपके विंडोज के अंदर एक लाइनेक्स मशीन, यू कैन रन इट और यू कैन कनेक्ट, और जो एक्सपेरिमेंट करना है कर लो। ओके, बट ऋषभ डोंट से दिस इन इंटरव्यू। ओके, इंटरव्यू में जो प्रिंस ने किया था वो बोलना है हमें। ओके, है ना, आई Okay. हैव कनेक्टेड टू AWS मशीन, GCP मशीन। या ऋषभ कंटिन्यू। So I will take just basic commands, which is already described by the Vikas sir already. And yesterday I have created one user as a recept test. So first of all, I will become as a root user. So I will use my this command sudo I. So it will ask for the password. I will provide the password here. So it become to me root user. From here I can perform the basic commands from here. So I will take just basic commands which like sudo I is the one command which I have already explained, and pwd we can check with the help of pwd the my current path, current directory here. And second, and with the help of ls commands, we can check in whatever the directories are available, which files are there, and which folders are available here. And with the help of cd command, we can check the directory, in which directory we are in. And with the help of mkdir, we can create the directory, uh, and we can check the directory it is created or not. So yes, it is created. And with the help of touch commands, we can create any file. So this will provide the result. Yeah, so these are the 5 commands. Just yesterday I was just अब दो doing. एडवांस, बहुत हो गया बेसिक, अब दो एडवांस कमांड। एनी Uh, टू। So advanced command, we can check like we can change the permission, we can add the users, चेक and करो, परमिशन चेंज करो। चेंज द परमिशन ऑफ दिस फाइल, एनी फाइल, शो मी द परमिशंस ऑफ ऑल द फाइल, एनी फाइल्स की क्या परमिशन है? I think ch mode and file name. नहीं, ls-l, to check the permission you have to run the ls-l। चैट में देख लो यार, बहुत सारा आंसर आ गया, ls-l। okay, now it is showing the permission। okay, now you have any file, okay, जो भी आपने बनाई है उसकी परमिशन रीड राइट रीड रीड है। okay, and I want the execute permission, कैसे दोगे? Uh, yeah, I will, sir. I have to do some more practice. Yesterday, I just अरे started the चैट में review. देख लो यार ऋषभ, इतना बड़ी टेंशन मत लो, चैट में देख लो, chmod plus x and give the file name plus x and X, file name space any file, yes any file any, हाँ enter, फिर से ls-l टाइप करो। हो गई, देखो ग्रीन कलर भी हो गया और एक्स एग्जीक्यूटेबल परमिशन भी आ गई। Okay. अंडरस्टूड? Yeah. ठीक है But ऋषभ, बेसिक next बहुत आसान session, होता है। next session, I will perform well. Just yeah. नहीं वेल, आपने परफॉर्म अच्छा किया है, गुड। ओके, बट बहुत बेसिक था। ठीक है, Correct. I मतलब know. आपको टारगेट ही 5 लाख की जॉब का कर रहे हो आप। ठीक है, गुड, अंडरस्टूड, एग्री, एग्री, यस और नो? Yeah, agree. है ना, थोड़ा सा हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, कम से कम 15 LP वाले तो लाने थे। चलो गुड, ओके ठीक है, मैंने भी बोला अभी बेसिक। ओके सारंग, यू वांट टू कम नेक्स्ट? यस सर, यस सारंग, बेसिक नहीं चाहिए, ठीक है ना, यस थोड़ा सा एडवांस चलेगा? यस ठीक है सारंग, शेयर योर स्क्रीन, गुड। ऋषभ वेरी गुड, ओके गुड। ऋषभ थोड़ा सा अपना कैमरा ठीक कर लो ना प्लीज, माइक माइक थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा कैमरा थोड़ा सा, हाँ करेक्ट, ऐसे बैठा। ओके गुड। सारंग बी कॉन्फिडेंट, ठीक है, शेयर योर स्क्रीन। सर। सर आवाज नहीं आ रहा। एक बंदा बोल रहा है कैमरे पे आने का कॉन्फिडेंस तो आ गया कम से कम। ठीक हेलो, है गुड। हाँ जी, यस गो अहेड। इज माय एम आई ऑडिबल एवरीवन? योर स्क्रीन इज विजिबल दोस्त, आई बहुत स्क्रीन सारी इज चीजें दिख रही हैं, हाँ ठीक है, यस। आप एक साइड प्रेजेंटेशन है आपका और अनदर साइड इज लाइक आपका सर्वर कनेक्टेड है, गुड ठीक है ओके। सो दिस गुड। गाइस लड़के ने मेहनत करी है, सारंग ने मेहनत करी है, सारंग वेरी गुड, यस गुड प्रेजेंटेशन, हाँ करो शेयर योर स्क्रीन, यस हाँ चले दो it's sharing. प्रेजेंटेशन, हाँ Okay, so हाँ this is हाँ my फुल फुल GCP कंटिन्यू। machine. So I'll ठीक be है uh, telling you about 5 commands which
I think I have prepared for the today's presentations. So I'll starting with the first command is find. So if you can take a look at here, so this command is used for searching the directory hierarchy, and we can search them, search files by name, type, size, and permission. What we can do- we can do- can just run this command. To find the files in the current directory, we have to use dot. And let's say we want to find the files in the root directory, we need to use the forward slash. Okay. Current directory. File is not here, so you won't find the file. You have to create that file. Search is the command which we can use for the creating a new file. Sir, voice not audible. Taran, your voice is not audible. Am I audible now? Yes, it's better Yes, now. yes. Yes. So, touch is the command which we can use to create file. Create one file, abc.txt. So it has created one file here, abc.txt. Then I can just use the earlier command to find the file with the name abc.txt. आपने ना डॉट भी लगा रखा है और हाइफन एम भी लगा है, ये लूप में जा रहा है। सर फाइंड एबीसी डॉट टीएक्सटी कर दोगे तो भी चल जाएगा, वो इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है। फाइंड स्टार टीएक्सटी, फाइंड स्टार टीएक्सटी हटा दो, सब ब्रैकेट डबल कोट्स वगैरह सब हटा दो। नहीं नहीं, फाइंड फाइंड डॉट यहाँ पे प्रॉब्लम है, डॉट और हाइफन के पास। नहीं, थोड़ा ये जीसीपी मशीन स्लो है सर। ओके, Okay, so this is the first command. star.txt he run, तो he find all the txt files, जितनी भी files हैं। star is a wildcard character, with the help of wildcard character he find all the files। ठीक है, चलो करने दो, सारा Okay. करने दो। So I'll be moving to the next command, which is head less and less. So this command is used to see the number of lines in the particular file. So you can just give the number of lines you want to see. So as you can see it here, the command is like head minus n. 20 is the number of lines you want to see in that particular file, and the file name. So the command looks like this. I will just ready some. Let's see. Okay, now we need to see the file content, so you can use the head command like this. For file lines in abc.txt. Okay, so we can just if you can see here, we are seeing 5 lines from this particular file. So head and less are the same commands. Just that we need to whenever there is scenario when we want to check the logs of error files or audit files, we can use this command for checking the number of lines instead of going through all the files, right? Then the next command is change ownership, which we have earlier saw, which is to change the mode of the file. So what we can just see the permissions to assign to that particular file, as we have seen here. Like this file has only read, write, and read permissions. So chown command is used to change the ownership of the files, not the mode. So chown is like the current ownership of this file is root, and if I want to assign this
change the owner of this file, we can just run this command like cd chown and name of the owner and the file. We will sure like whether which user will be here present. Let me just run this command for this one to change the ownership. Which own it's in the fields. Okay, so I'm not sure what user will be here, but this is the command to change the owner of the file. For example, if you are using Windows machines, so there will be your the owner will be the user like Sarang, like whoever has created that machine. So you can just mention the name of that owner and mention the name of the file, so that user will be assigned to that user. Currently, it is the root. So I'm moving to the next command. Is zipping the file. So this is the most used command in the Linux machine whenever we want to transfer large files from and to from the client and client to server. So let's say if I want to zip this particular file, I can just run this command gzip abc.php. So it will create a tar file like with the extension gzip. So as you can see here, this is the file which we use to compress it. So what this command basically does is it compresses the file with compresses files to a smaller size so that we can upload it to the servers. It's basically used for the deployments. Like we create a bundles of the softwares of the deployment files, whether it could be web server, web application, or the database files, right? So we can use this command to compress it and deploy it to the server. Then the next command is mount and unmount. So mount and unmount I have never used, but I just used because it's not listed in the Vikas directory. So basically, this is used to mount the drive to the particular volume of the machine which we are using. I haven't used that one, but I can just mention where how we can use it. So it is like mount. It is going to be the whatever the volume we want to use. For example, for I'm using Dave. And the external disk you want to mount that mount to that machine. So we need to mention the path over here. Is something like MNT and USB. So we just need to command. So this command is used to attach an external hard disk or device to the existing machine. So these are the basic 5 commands I have prepared for today's presentation. So thank you all. If you have any doubts, you can. Guys, how is the feedback for Mohit? Not Mohit, Sarang. क्या बोलते हो? सर Sarang, अच्छा all good. थोड़ा सा घबराओ मत. Okay, It was next time be very more nice. confident. है ना? Very good. Okay, you spend a time. Okay, आपने presentation बनाई. That's really good. Okay, बस जो लिखा है ना सब पता होना चाहिए हमें. Agree? Yes or no? Because ये चीज कैन जो आई whatever स्टार्ट you are, हाँ, whatever you are doing it ना, ये आपको अब रिज्यूम में जाएगा आपका. करेक्ट? और जब Yes, sir. रिज्यूम में जाएगा तो आपको यही सेम चीज यू हैव टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर एज वेल. Okay. राइट? तो Yes, sir. कॉन्फिडेंस हम यहाँ पे अभी क्या कर रहे हैं? अच्छा बताओ, व्हाट वी आर डूइंग इट गाइस. हम लोग क्या कर रहे हैं आज? बताओ. अच्छा, अब क्या मकसद है आज का, ये बताओ सिर्फ. So we are टू learning पॉलिश and और बेसिक्स नहीं, revising टू the पॉलिश और way how बेसिक्स एक सेकंड, एक बेसिकली सेकंड, एक do it. सेकंड, एक सेकंड. क्या मुझे आपको 5 कमांड पढ़ाना है, ये मकसद है क्या? नहीं, मुझे नहीं ये सर मकसद है ही No. नहीं. मेरा व्हाट इज द बैक एंड मकसद? हाँ बोलो. So I would like to add the way the people are expressing or providing their presentation, that is very important what we are learning over here.
जैसे मैंने अभी 1 मिनट 15 मिनट पहले आपका ये आया था, मैंने थियोरिटिकल खाली चीजें प्रिपेयर की थी। लेकिन बंदे लोगों ने बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किया और उसको प्रैक्टिकली मशीन में उसको एक्सप्लेन किया। दैट इज रियली वेरी वंडरफुल। दिस विल वैसे हेल्प अस फॉर आवर फ्यूचर मोस्ट इवेंट्स। इम्पोर्टेंट तुमने प्रिपरेशन करी है, करेक्ट। राइट राइट। सारंग ने कम से कम 2 घंटे प्रेजेंटेशन पे स्पेंड किए हैं, करेक्ट। राइट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, अब वो लाइनेक्स लिखने के लिए एलिजिबल हो रहा है। मुझे नहीं पता सारंग कौन से बैकग्राउंड से, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट नाउ वी कैन से कि हाँ, सारंग को, प्रिंस को, ऋषभ को, इनको लाइनेक्स आता है। मोहित भाई एग्री, हर्ष एग्री, संजय? अरे यस नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes. Yes, sir. Yes. हाँ, हु वांट टू गो द नेक्स्ट? Sir, कौन जाना चाहेगा? I'll be, sir. Please. अरे नहीं, मोहित हो गया अभी, फिर से थोड़ी देर सर बाद ऑफिस, है ना। सर कुछ नहीं हुआ सर, मेरा को पता ही नहीं कुछ। ऑफिस सर मैं जाना है? यूज केस दिखाऊंगा सर। चलो ठीक है भाई, ठीक अब है सर। मोहित आया इज बैक। ओके, मोहित वर्जन 2.0, आज मोहित करो देखते हैं। मोहित के बाद नेक्स्ट यासीन, मलय एंड संजय, हम लोग इस ऑर्डर में हैं। हर्ष, ठीक है ना हर्ष? ठीक है। So is my screen is visible to everyone? या मोहित, योर स्क्रीन इज विजिबल। Okay. So basically, I have this is my mobile stream application, and I have open one Ubuntu instance. So let me clear all this thing. So let me. गाइस, क्लियर इज अ कमांड टू क्लियर द स्क्रीन। ठीक है, हाँ जी, Yeah. आगे बढ़ाइए। Now, sir, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ, अभी मैं कर रहा हूँ। Wait. हम्म। So the first command is, if in a real scenario, like yesterday, sir has explained the auto scaling. So in your scenario, in your use case, if you want to see how many top command, and if you want to track it, like what are the commands to increase it, and if you want to see in the real scenarios, then what is the first command is stress. So if you want to use it, stress command, this is the way I'm going to show it to you guys. So I'm going to split my screen with the help of tmux command. What is it? मोहित, वहां पे ना हमारे पास स्प्लिट का ऑप्शन आता है मोबाइल स्ट्रीम में। आप स्प्लिट का ऑप्शन है ऊपर देखो, यूआई पे से ही है ना। तो आप स्प्लिट, हाँ, Okay. यहाँ से भी कर सकते हो Okay. अगर आपको स्प्लिट करना है तो, है ना। ठीक 2 है। टर्मिनल, 3 टर्मिनल, हाँ, Okay. है ना, ये रहेगा। ओके, Nice. cool। यहाँ पे आपको फिर से कनेक्ट करनी पड़ेगी मशीन, है ना, जिसको अलग करना है सर दूसरी वही मशीन। तो, मुझे वो कनेक्ट नहीं करनी थी, मुझे बेसिकली इसके अंदर ही इसको मतलब स्प्लिट करना था विद द हेल्प ऑफ tmux कमांड। सो tmux यार कमांड आई ये ना कैन शायद ट्राई। मोबाइल स्ट्रीम सपोर्ट नहीं कर रहा, आपको पुट्टी वाला कमांड है वो, है ना, शायद। मैंने अभी से ट्राई किया था थोड़ी देर पहले चलो जस्ट। ठीक, करो करो करो, ठीक है, ट्राई करो। इसको भी हटाऊं कैसे सर मैं हाँ, हटा दो हटा दो, वो एग्जिट वहां पे ऊपर साइड में एग्जिट से कर दो। ये पुट्टी में ज्यादा काम करता है, मैंने यूज किया है। अरे यार ये कहाँ से हटेगी? वहीं पे स्प्लिट पे जाके फिर से बंद कर दो ना, स्प्लिट पे आके बंद ओके। कर दो। स्प्लिट स्प्लिट स्प्लिट, नीचे आके, नीचे आके, नीचे 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 अच्छा ओके। नीचे नीचे नीचे, हाँ, स्प्लिट पे बंद कर दो ना, तो अरे यार। कनेक्ट करना पड़ेगा, हाँ। ubuntu की स्पेलिंग ठीक है। Starting in. So tmux is now running. Now I'm going to check with control B. I don't know why it is not splitting it right now. Okay, the second command is, so basically when we take the tmux command, the one command is stress command, which we, if you want to increase the CPU size, and the auto scaling was explained by Vikas sir yesterday. So if you want to increase the CPU size by manually, then it's a stress command. So we need to first install the stress install in our system. So apt get update first we need to run, and then we need to run apt get install stress, and the command is stress minus C. C is denoted as a CPU. So what range you want to denote it? It's a 5 or 10. So the CPU would like to increase. Now in the system, if you in the system, if you want to like the auto scaling, so if the auto scaling tracking automation is enabled, so let's suppose the is automation enable. So in the dynamic policy, there is an automation where the on AWS is tracking
manually, then if it is increase the size CPU 100, then it will gradually increase the instance in our system, or as the traffic needs, so that the CPU instance will be increased automatically. The second command is if you want to see the how many disk sizes available in your instance, lsblk is the command. So here it provides the how many disks are attached, their partition name and size, and where they are mounted. So basically, the volume is so the root is 8 GB, but I have mounted one of the disk size which is 25 GB. I would like to show it to you here as well in the volumes. So I have placed my volume with the size of 25 GB, and right now it is in use. So with the help of this one, and there is one more command if you want to see whether the file is formatted or not. So there is one command if you file s. So we have a dev. मोहित एक बार अटैच करके दिखाओ ना मोहित, जस्ट अटैच इट टू इन फ्रंट ऑफ एवरीवन ना, एक बार करके दिखा दो, एक बार वॉल्यूम बना लेते हैं, है ना? Yeah, sir, sure, sir. I will do it. I will do it, sir. Let me, sir, detach this one, and then I will attach it once again. या डीअटैच कर दो, या डीअटैच इट। सर शिवर कर रहा हूँ, पता नहीं मैं क्यों। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे होता है, समझ होता नहीं आ है। रहा। एक्चुअली इतने सारे लोगों के सामने मैंने पहली बार दिया तो कोई बात देखो यार, दिस इज ऑल्सो लर्निंग, ठीक है, ये भी तो सीखना है। करेक्ट, आराम से, कूल यार, भूल जाओ, कोई नहीं है, ये मान लो तुम अकेले हो बस। Okay, You are the so right alone. now it is detaching. The 25 GB is the one if you want to differentiate between the root and the volume. So it's a differentiating. So I'm going to again to the machine. So I'm again run the lsblk command. So if you see here the difference, here is the 25 GB attached previously, and right now it is not attached. Only the it's the only the root volume is there, which is 8 GB. Now I want to attach it once again and show it to you. So again it is. Click to my volume in the volume size and action and attach the volume. Okay, let me. So my volume, action, attach. Oh, sorry. Attach. Now here comes a new prompt where it's asking on which instance you are attaching this volume. There is a note. If your volume is in the availability zone of AP South 1A and your instance is running is AP South 1B, then the volume is not attaching. Okay, and it will be mentioned in the Vikas pages, the PPT, and also my instance running in this one AP South 1A, and I want to give the data volumes, which volume I want to give it. It's a format device SDB, SDC, and SDD. So I am taking one of it SDC and going to attach it. Okay, it is showing it's already attached in one of the mount points. So I would like to take another one. So let's suppose I would take SDD. This is the attached volume. So I'm going to my machine and let's see whether it is attaching or not. lsblk. So see if you can see this, it is already attached. Now before formatting it, formatting. One second, guys. In simple short, he has mounted one more drive into this. Okay, और in short हम लोग AWS में उसे attach कहते हैं, और Linux की लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं mounting a disk। जो पहले पूरा कमांड से होता था, मोहित डिड फ्रॉम द यूआई, क्योंकि वो क्लाउड पर है। ओके, हम लोग पहले क्या होता था, जब व्हेन वी आर, इफ लेट अज्यूम यू आर ए लाइनक्स एडमिन, यू हैव दिस मेनी माउंटेड पॉइंट्स आर देयर, यू क्रिएटेड एनी अदर माउंट, एनी अदर लोकेशन, और कुछ माउंट अनमाउंट के कुछ कमांड्स होते थे, उससे भी कर सकते हैं, पर मोहित डिड इन अ वेरी स्मार्ट वे, क्लाउड इंजीनियर अप्रोच से ही डिड इट। गुड मोहित, वेरी गुड। And the second command, let's suppose if you want to, check the file whether it is formatted or not. So for example, if you want to see this nvme1 in one and one command is the, is there anything in this file or not? So how do you see it? So let's suppose there is a command file s dev, and I want to give the file name, which is nvme1 and 1. So here it is showing data. So data means it's nothing, it is there. Now I'm going to show you how to check if there is data in there or not. The third command is mfks.ext4. This command is the formatting command. Now we are going to format this command and adding some files in it. So adding the files is the command of touch command, or any directory if you want to make it on the test. So let's suppose mk. MKFS.
make dev and put the file name nvme1n1. Now here it is telling me, okay, it is file system. So this is the file system. It's already created it, and this is the file. Now I'm going to make one. What do you say? The like directory in this. So mkdir test. Come on. I make it, and in that I have make some policy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. This is what I did, and in change the directory and go to cd test and l. Oh, sorry, cd test. Why it is not noting it? Cd test. Okay. Okay. MQD, sorry. MQDIR. So this is what I've made it, and one command is there as well. I have going to do. Welcome, Mohit. Mohit demo.txt. Now, if I want to see like how many files I have made it in this one, so one is demo.txt and other one is 1, 2, 3 is a touch file. Now I'm going back to the main file is cd and pwd. I want to just see the command. I'm at root one, so lsblk. So here if you can see this one nvme, and I want to see whether it is formatted right now or not. So file s dev nvme1n1. So here it is showing there it is a formatted command, and it's something in there in this file. So previously, if you see this command, it is showing when I put it file.s data, it is showing nothing in this, and now it's showing file s command, it's something data. So before you deleting any file or before you formatting any file, you need to first verify before for this command whether anything is situated in this file or not. So this is the command, and the fourth command is the stress command, which is I'm going to show it to you. Let me clear this one. So tmux and control plus B is there and shift 5. So see, this is the divide command. So how I split it this particular screen in this one. So first I have run the command tmux. So tmux is providing the command. Okay, you want to delete it. You want to splitting it. So the green signal is showing in the below. Now the second command I have put it control plus B. Control plus B is providing the output of the tmux command. Now it's going to splitting it. And then I have third command is shift plus 5. So shift plus 5, it's a vertical command, a vertical way, dividing the screen. And if you put the control plus arrow or control plus equal to, so it will give you the downstream, up and down. So I am going to, give you the vertical way to splitting the screen, that is shift plus B. And I'm going to here. So if I want to make a run top command here, so now if you want to see like how to, going back to the left side or right side, there is a command tmux select pane and set left. So I'm coming in the left hand side. So this is the basic way. And if I want to run top command, like top notch, processor is running on the left hand side. I want to, make a stress on the right hand side. How to do that? So let's suppose I would put the top command here. And if you see right now, my CPU is running at 4.8. And if I want to go to the right hand side, how do I do it? So control plus B and arrow. I coming out on the right hand side. In the right hand side, I am going to start the stress command. How to do the stress command is first I need to run the stress install. So apt get update. It is updating it. So because we need to update everything, there is every process are running. Before So installing, apt get any of the user software, scroll. one second, wait, one second.
before sir. installing any of the software, we have to update our packages. Okay, and he did the same thing. This is called best practice. When we are installing any of the software, we have to update our packages. That's it. Right, sir. Okay. Thank you so much, sir. And this is the way, like I have, installed the stress command. Now I'm going to run it. So how to do that? So first I'm going to sudo. So I'm in sudo, right? Yeah, root in it says. So stress minus C. C is denoted as a CPU, and I have put 5. So if you can see here, my CPU is right now 99 point something, and here the CPU is 100%. So if I have, already, going to make the auto scaling group as well. So first you need to make the launch template. So I don't want to explain that, but yeah, this is the way, like you just, in the real scenario, if your manager or lead asks you to, run in the way, like how to see the CPU, and if you want to make it the stress on the, or like manually, then how to do that. This is the way. And if you want to delete it, if you want to decrease it again, Control C. So it is again, decreasing from 100 to 69. And if it's now is 0.2. Now, if you want to clear this machine, then you should exit. It's in the running, Control C, exit. Now your tmux is running, and yeah, this is the command, sir. So 5 command is there: lsblk, file s, mkfs, stress. Wait, just write into the chat box, chat and give it to everyone, है ना? आराम Sure, से. sir. इसके Sure, बाद sir. आराम से 2-3 मिनट. Guys, how's the Mohit thing? So this is the command I give to you. Great. मोहित भाई, गौरव शर्मा. क्या गौरव शर्मा? क्या हो गया सर? समझ गए सब. समझ गए मोहित भाई, समझ गए. Good. Guys, whatever it is, good. Mohit, really very, very good. Okay? बहुत Thank you, अच्छा sir. है. Okay? Good. Guys, see, Thank you, guys. Thank you no so much. worries. ये जो मोहित ने किया है ना, I will do the same. हमने किसी एक टॉपिक में किया है, HPA, किसी को याद है? Previous batch student? यस सर, HPA VPN. क्या किया है? यासीन, हमने क्या किया है बताओ. हमने यही सेम चीज करी है. कैसे करेंगे हम लोग? हमने हॉरिजॉन्टल पोर्ट ऑटो स्केलिंग में की है, कुबरनेटिस में सर. हाँ, हम लोग ये एक्सपेरिमेंट जो मोहित ने अभी आपको लाइनेक्स में दिखाया ना, आई विल डू द सेम थिंग विद द पॉड इनटू द कुबरनेटिस क्लासेस एज वेल. ओके मोहित, वेरी गुड. आपने ये चीज यहाँ पे डेमोस्ट्रेट करी है. वी विल लर्न इनटू द कुबरनेटिस Thank you, क्लास. sir. उसमें हम लोग है ना पॉड के साथ ऑटो स्केलिंग करेंगे. ओके, मोहित ने स्ट्रेस किया है. हम क्या करेंगे, हम लोग एक बिजी बॉक्स बनाएंगे और उस पर लोड डालेंगे. ओके, सर हम एक्चुअली लोग मैं ना उसमें इसको भी ऑटो स्केल भी करने वाला था, बट पता नहीं क्या हुआ, मैंने थोड़ा सा भूल गया मैं. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात तो वो नहीं. थोड़ा प्रेशर था, अंडर प्रेशर में था मैं कोई थोड़ा सा. दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं. ओके, वी विल पुट द लोड इनटू द वेबसाइट्स. ओके, हम लोग विद द बिजी बॉक्स और कर्ल कमांड को बहुत सारा रन कर करके, ओके, वी विल पुट द लोड और हम लोग ऑटो स्केल करेंगे सर्वर्स का. ओके, कूल, थैंक यू, वेरी गुड, व्हाटएवर इट इज. मोहित, बहुत अच्छा था. थैंक गाइस, यू, सर. एवरीवन एग्री? सब लोग एग्री हो? या गुड हैव यू गुड लर्न गुड. समथिंग न्यू? कुछ नया सीखा? यस और नो? Yeah. Yes, sir. या देखो, आप है ना सेम टाइम स्टूडेंट वरीड कि सर एक्सपीरियंस पर्सन है मेरे बैच में, मेरा क्या होगा. भाई, एक्सपीरियंस पर्सन तुम्हें सिखा के जाएगा और हमने मोहित से सीख लिया, दैट्स इट, और कुछ नहीं. ठीक, वो अपना 40 50 60 LP उठाएगा, बट आप लोग को 20 30 पैकेज दिलवा देगा. यस और नो? गाइस एग्री? बस Yes, दैट्स इट, I have a डरना नहीं है. question. I have a हाँ, question. solution. तो लास्ट जो स्ट्रेस वाला कमांड उसने रन किया, तो उसमें व्हाट स्ट्रेस माइनस सी टिल दैट आई अंडरस्टूड व्हाट इज दैट 5 नंबर इज फॉर. It is the output, how much stress you are providing to your CPU. Okay. And why do we use stress? Because if you want to increase or auto scaling in the manual way, so let's suppose as Vikas sir told in the auto scaling classes, so let's suppose a big billion sales is coming on a Flipkart, so instance is coming. So if so in a bad way, like you don't go to the add your instance again and again, like the traffic is coming. So as per the traffic instead, you want like your instance is added automatically. So that is why we are using. So this is the way, like I'm putting in stress to the CPU so that the instance is automatically adding on my machine. So I have I'm not able to show it to you guys the how to add the CPU, because how to add the instance, because I have do it right now. But in next classes I would like to give you one of the example explanation as well on this. थैंक यू. ओके गाइस, हु इज द नेक्स्ट जिसको ऑफिस जाना है? ऑफिस किसको जाना है? हर्ष, पक्का ऑफिस जाना है?
उसके पहले विकास सर, आई हैव वन क्वेश्चन। सो लिनक्स का एक तो आपने जो पहले पढ़ाया वो सेशंस तो हमने ज्वाइन ही नहीं किए थे, ठीक है, ज्वाइंट ऑन नहीं 30th किए थे, ऑफ। नहीं किए या किए? नहीं, मैंने तो 30th से किया ना बैच ज्वाइन। आपने नहीं किया? दीपिका कोई हाँ, बात नहीं, आपको देखो 30 से आज हम लोग 3 दिन में आप शायद रिकॉर्डिंग देख सकते थे दीपिका, करेक्ट? रिकॉर्डिंग में इतना नहीं समझता। रिकॉर्डिंग का इश्यू भी था विच इज रिजॉल्व्ड यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे ओनली। दीपिका कोई बात ओके। नहीं, आपका जो भी रिकॉर्डिंग का एंड इशू था कोई बात नहीं, ओके अभी के दीपिका नो सेशन में वरीज। दीपिका 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 कोई बात नहीं, आप मेरी बात सुनो। ओके दीपिका नो वरीज, अगर आपने मिस किया कोई बात नहीं, मैं आपको नेक्स्ट बैच में फिर से पढ़ा दूंगा पूरा, ठीक है चलेगा? है ना, मैं आपको पूरा मैं आप पढ़ाऊंगा, मैं खुद भी पढ़ाऊंगी। पढ़ाऊंगा, है ना? कल होने वाला है हमारा सेशन। अरे कल नहीं होने वाला है, नेक्स्ट बैच तो 6 महीने 3-4 महीने बाद होगा नेक्स्ट बैच। ओके तो जो है ना? 15 दिन देखो आज में का सी, जो है वो नेक्स्ट नेक्स्ट बैच में आप मुझे बोल रहे हो कि अब वो कवर होगा करके। मैं आपको, नहीं नेक्स्ट बैच जो अगला, ये आज इसीलिए तो हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं, जो हमने पढ़ा है ना ये क्विक रिवीजन ही है, ये सब हमने यही चीजें, कुछ चीजें थ्योरेटिकली करी, कुछ चीजें प्रैक्टिकली, कुछ बेसिक से लेकर मैंने 5 दिन में पढ़ाया था, यही सारी चीजें हम लोग आज रिपीट कर रहे हैं। ओके विथ समथिंग न्यू एज वेल, कुछ नई नई चीजों के साथ। आज तो मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो गया ऑनेस्टली। बट अरे ठीक है, दीपिका आई विल दीपिका कनेक्ट दीप, विद दीप, यू। दीपिका 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 कोई बात नहीं, देखो कॉन्फिडेंस, ये इतने टेंशन मत लो यार, देखो क्या होता है, आप देखो जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आप जीरो, और जब तक आपको मार्केट की रियलिटी नहीं दिखेगी, दैट्स कोई मतलब नहीं है उनसे, जो आपको मार्केट में कूदना ही पड़ेगा। ओके दीपिका नो वरीज, आई विल टॉक विद यू, ओके चलो कूल, थैंक यू। ओके गाइस, हर्ष यू वांट टू टॉक, यू वांट टू स्पीक अप, बोलिए जी, गो अहेड। सर मैं ना एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, सिर्फ एक ही यूज केस, उसके अंदर सभी कमांड आ जाएंगे, मिनिमम 5। सभी कितने, सभी मतलब कितने? मिनिमम 5। हाँ सो ठीक है। हम क्या हाँ करेंगे, ठीक है। मेरे पास दो सर्वर है, सॉरी दो, एक सर्वर है जीसीपी का, एक सर्वर मैंने क्रिएट किया हुआ है। मैं एसएसएच से मैं कनेक्ट हो गई हूँ यहाँ पे। ये मेरी लोकल मशीन है। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक फाइल में क्रिएट करूंगा लोकल में, मैं उनको एक्सपोर्ट करूंगा हर्ष सर्वर पे। प्रैक्टिकली हर्ष शेयर द प्रैक्टिकली स्क्रीन। प्रैक्टिकली हर्ष प्रैक्टिकली, सॉरी सॉरी सॉरी। है ना, प्रैक्टिकली यस। गाइस देखो हर्ष भी कुछ कुछ तो प्लान लेके आए हैं यार, 2 सर्वर कुछ तो मूव करेंगे, कुछ तो होगा, चलो गुड। हाँ जी। सर मेरी स्क्रीन दिख रही है ना सबको? हम्म। ओके। मैं शायद शेयर करना भूल गया था स्क्रीन। ओके। गुड। आप ये तो मेरा छोटा सा एक एग्जांपल है, मिनी टास्क। उसके अंदर क्या है कि यहाँ पे मैंने एक AW जीसीपी का एक मैंने इंस्टेंस क्रिएट किया है, और मैंने कनेक्ट किया एसएसए थ्रू। ये मेरा लोकल है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट फाइल करेंगे, जैसे कि हम लोकल से एक फाइल में अपलोड कर रहा हूँ सर्वर पे, और सर्वर से मैं एक फाइल कर रहा हूँ डाउनलोड इन माय लोकल सिस्टम। फिर मैं एक पाइथन फाइल एक क्रिएट करूंगा, और उनको मैं जैसे कि उनको मैं बैकग्राउंड प्रोसेस दूंगा, जैसे कि वो बैकएंड में प्रोसेस होती रहे। और दूसरा कि उनको हम कैसे किल करें, एक छोटा सा टास्क है। गुड। अब यहाँ पे हम जो लोकल मेरा है, यहाँ पर एक लिनक्स डायरेक्टरी है और एक पाइथन फाइल है। यहाँ पर हम अभी हम देख लेते हैं कैट, और इसके अंदर लिखा है हेलो टीम। ये है मेरा हर्ष सर्वर है। थोड़ा सा इंग्लिश, हर्ष थोड़ी सी इंग्लिश तो यूज करो, थोड़ी सी तो यूज करो। Sorry, sir. Yes. So this is my GCP server. We can do it here ls. So we don't have anything here. If we see here pwd, so this is my home directory. Here what we can see here, in here, this is my, again, this is my Mac laptop. I'm here in AI, and now I'm trying to upload this Python file to this GCP server and to this specific path. So how we can do it? Using the scp command. And first thing is, like, when we have to upload any file using the scp, first thing is we have to use scp command. Then after, whatsoever the file name we have to provide here, and then after we have to connect through the, like, let's say the username at the rate 34, and the IP address or the domain name 142.110. And then after we have to provide the colon. Then after we have to provide the path, like this path, like whenever you want to upload that specific path, we have to use here, and we have to paste here. One more thing is, we don't need to only use this specific path, but we have to provide here as a dot.
So what happened is this file particularly download here, sorry, upload here. So that's the reason we have to provide here dot. If we will not use here dot, we will get error message, or it will upload the file. So yeah, right now it's uploading the file, so that's good. We can see here, this is Python file available here. You can see here, and let's execute this file using the Python 3, and you can see here hello team. Now what I have to do is, like, I have to add infinite loop in this Python file using the VI editor. So like, let's while and save. So let me show you one more thing. Like you can see it's infinite time, it's let's say processing, right? It's not going to end at the moment. But the thing is, let's assume this is my one application which is available in Django, Flask, or Fast API, whatsoever the application is there. I want to just use in the background. I don't want to create a specific service file. So for that, we can use here no hub. And then after, like, say, we have to use this Python 3 and that Python file. And if we will do like this, so what happen is it goes to the back end, and it's the output is storing into this no hub.out file. But you see here, my it's not terminated here, right? If I will press one more time enter key or control C, so it will terminate the process. Let's check whether it is still available in the process. So aux grep -i Python. So you can see here there is no file is available here, right? Oh, 1 minute. Okay. So that file is not available here. So what we have to do is, like, if we are using here %, so it's completely goes to the backend. So, and one more time we can add here enter, and we will see here with the ps command again, and now you can see the file is going into the backend. Now let's वेट ओए आराम से, कोई जल्दी नहीं। हर्ष ने क्या किया है, फर्स्ट एससीपी से एक फाइल को एक सर्वर से दूसरे सर्वर में मूव करा। गाइस अंडरस्टूड, यस और नो? उस फाइल का नाम था python.sh, python.py, करेक्ट? गाइस एवरीवन समझ में आया? एवरीवन एवरीवन एससीपी कमांड से, ओके? कमांड से मूव करने के बाद फाइल केम हियर, देन ही रन द फाइल मैन्युअली। मेरे घर के नल कैसे? संजय, आपके यहाँ से बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, म्यूट गाइस, म्यूट, अपने आप को म्यूट कर लो प्लीज। ओके, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके कूल। आफ्टर दैट व्हाट ही डिड, उसने उस फाइल को पाइथन से रन किया, ओके, वन टाइम, एंड देन पुट ए लूप, ओके, व्हाइल लूप लगाया, तो वो फाइल हमेशा चल रही थी कंटिन्यूअसली, ओके। अब ही टोल्ड कि यार वी वांट दिस प्रोसेस टू बी रन कंटिन्यूअसली इन द बैक एंड, तो नो हब के साथ % लास्ट में लगाया है, सो दैट दिस प्रोसेस इज रनिंग इनटू द बैक एंड। फ्रंट एंड में उसका कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है, बट वो बैक एंड में वो कंटिन्यूअसली रन हो रहा है। करेक्ट हर्ष? यस और नो? करेक्ट है ना? सर। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सी द प्रोसेस इज रनिंग, ये प्रोसेस नंबर 4200 जो आ रहा है, ये प्रोसेस आईडी के साथ ये रन कर रही है। गुड गुड, correct. So let's kill that process, or before that we can see here ls, and here you can see the nohub.out file is here. Let's check it out. So you can see it's continuously printing that particular print statement. So that means it's executing. So let's say I want to, sorry, okay, clear. So I want to just let's say kill that process. Like, I have done my test. So what we can do is like kill -9, and simple I will use this process ID 4200. किल मींस 9, दीपक, हर्ष, किल -9 मतलब yeah, completely forcefully shut down. Forcefully killing, okay, ठीक है, good. And then now check it again. And if you will check it again, so that process automatically killed. Not automatically, हमने kill करी है, kill Sorry, -9 से। yeah, using this command, yes. with this command it is killed.
Yes. And now let's say my process is done. Okay, I have done one successfully, let's say this file test. So what I have to do is like I have to download again in my local system here. So let me again, let's say remove this Python file. Now you can see I have only Linux directory. Okay. And we can see here cat Python. So we can see 3 line of code is available here. And simple, we can use again this SCP command, but a different way. So this is specifically for the upload file to the server. Let's say I want to download it. So what I have to do is like I have to use again SCP username at the IP address or the domain name. Then after from where this file is located, right? So this file is located here, home, and this username. So I have to copy this one here after the colon, and that particular file name we have to copy. And simply here we can paste here in a which directory, right? So right now I want to update in my current directory. So that's the reason I'm using here dot. And simple, we can enter and it will automatically authenticate and it will download. You can see here the progress also. If we have a large file, it will provide here estimation time, the download speed, and this is the percentage, like how much percentage it's done. And you can see here ls Python file is again available or downloaded successfully. And let's check the content. Yeah, that's it. If you guys have any question. गाइस दिस इज द परफेक्ट लाइनक्स एडमिन। एक फाइल से दूसरी जगह मूव करना है, उसको रन करना है बैकएंड में, और फिर उसको किल करके दूसरी जगह मूव करना है, मतलब उसको डाउनलोड भी करना है। ओके, दिस इज कॉल्ड डेमो। इसी को रियल टाइम में डेमो कहते हैं। ओके, मल्टीपल मशीन्स आर देयर। ओके, उसने नया नहीं, वो पंडित वाली मशीन ही यूज कर ली है। ही वाज वेरी स्मार्ट, करेक्ट? No, sir. गाइस आप लोगों को This is another server. नहीं, वो एक पंडित वाली मशीन में तो ओपन है ना फर्स्ट, करेक्ट? Yes. है ना, एक मशीन पंडित ही यूज कर दी है सर। मल्टीपल मशीन कहाँ से लाए? तो पंडित के अंदर आप मल्टीपल लॉगिन करके आप वो भी यूज कर सकते हो। यूजर सेम रहता है बट आप यूज कर सकते हो ऐसी चीजें। ओके, तो दैट इज एक्सपेरिमेंट। सर लेकिन ऐसे परमिशन नीड नहीं होता यहाँ क्लाउड मशीन में पब्लिक लोकल पब्लिक से? आईपी, एवरीथिंग इज पब्लिक आईपी। सब पब्लिक आईपी से कर रहे हैं ना हम तो। ओके ओके, और कंपनीज में ये सारी चीजें नहीं भी चले, शायद नहीं भी चले पब्लिक आईपी से। ओके, क्योंकि वो मशीन पब्लिकली अवेलेबल ही नहीं होगी। करेक्ट? हर्ष एग्री? इशू वही। Yes, correct. हाँ, तो वो प्राइवेट आईपी से करना पड़ेगा आपको। एवरीथिंग शुड बी टू द सेम वीपीसी और प्राइवेट आईपी से। Harsh, सर I have a रियल टाइम question. यूज क्या होता है सर? जब हम when we want to download any specific database or we have to upload our application to the server or we have to download, in that case we can use for this no hub. It's specifically used to, like, let's say one process we have to do in a backend, and we don't want to wait for the end of that process when we can continue to our any of the another commands. It's called no hub signal, na? I think Ashbhai, no hub signal is given to the background process. No hub signal, I think. Linux. Yeah, no hub. Correct. So, Vikas sir, it is like robocopy only, right? One second. Some student may ask the commands with you, तो प्लीज आप ये सारे कमांड्स पहले ही शेयर कर दो। ओके, नहीं तो सारे स्टूडेंट मुझसे पूछेंगे सर हर्ष के कमांड चाहिए। हर्ष, शेयर इट राइट अवे, है ना? गाइस जो भी प्रेजेंट कर रहे हो, है ना, आप यू कैन राइट योर कमांड्स, और गाइस यू कैन जनरेट द समरी। उस समरी में सारी चीजें आ जाएंगी। यूज द पावर ऑफ एआई। करो गाइस, जनरेट द समरी प्लीज। ओके, जनरेट द समरी। ओके, जिसका भी आपको सारी डिटेल्स चाहिए, माय एआई विल गिव यू दैट डिटेल्स, क्योंकि हम लोग ये सब अपने एलएमएस सिस्टम पे डालेंगे। ओके, तो यस, यू विल गेट द डिटेल्स फ्रॉम द माय एआई एज वेल। अब मैं आपको एक और यूज केस दिखाता हूँ, एक और बहुत मजेदार यूज केस। ओके, जैसे लेट अज्यूम आज आपको हर्ष की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगी, करेक्ट? यस और नो? लगी? बोल दो हाँ, बोल दो यार। बहुत अच्छी है सर, अच्छी लगी सर, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। हाँ, मान लो रोहित क्या हर्ष की, मोहित की आपको बहुत अच्छी लगी। ओके, अब आप क्या करोगे? यू विल, ये सब मेरी वेबसाइट के अंदर होता है। ओके, ये सब एआई हमारे वेबसाइट के अंदर होता है।
आप मेरी वेबसाइट में जैसे ही अंदर आओगे एक्टिव कोर्सेज के अंदर, ओके, अपने बैच 43 के कोर्स के अंदर आओगे, ओके, जैसे ही अंदर आओगे हर वीडियो के साथ मेरा एक एआई चलता है, पता है, ये रहा, आस्क मी एनीथिंग, पता है, यस और नो? अरे यस नो? Yes. Yes, sir. ओके, It has उससे only 8 पूछो। tokens, right? क्या बोल रहे हो? It has only 8 tokens. अरे हाँ यार, सी एवरीथिंग इज टोकन बेस यार दोस्त, है ना, क्योंकि कुछ Yeah. स्टूडेंट तो यहीं पे मालूम है वो वीडियो नहीं देखते, वो इस चैटजीपीटी को 100 क्वेश्चंस दे देते हैं, ओके, तो इसलिए टोकन बेस कर रखा है, ओके, बिकॉज सी एवरी एआई इज वर्किंग ऑन टोकन बेस, ओके। तो क्या होता है, 8 क्वेश्चन बहुत होते हैं यार, रोज 8 क्वेश्चन पूछ लिया आपने, बहुत होते हैं 8 क्वेश्चन, गाइस, यस और नो? प्रैक्टिकली, Yes. ओके, है ना, 8 क्वेश्चंस Yes. बहुत है, मतलब आप एआई को भी वो कर दोगे ऐसा नहीं कि आज एक रात में नहीं बनना हमें 8 क्वेश्चंस, आप एक साल तक 8 क्वेश्चंस बहुत होते हैं, 8 क्वेश्चन एवरी डे, 8000 क्वेश्चन आप मेरे एआई से पूछ सकते हो। इंस्टेंट ऑफ वॉचिंग द फुल वीडियो आप यहाँ पे क्वेश्चन डाल सकते हो कि व्हाट मोहित इज एक्सप्लेन, कैन यू गिव मी द कमांड्स, वो ये दे देगा, ओके, बिकॉज ही इज वॉचिंग दैट वीडियोस। और ये एआई, ये जो एआई है, ये मेरा एआई, इट इज ट्रेन्ड ऑन दिस वीडियो, प्राइमरली मेरे डेटाबेस के लिए, मेरे वीडियोस के लिए, अंडरस्टूड? समझ में आया, ये सुनो, ओके। ये तो एक अंदर का एआई है जो एलएमएस सिस्टम के अंदर है। और अभी जो अपना वाला ये जूम कैंपेनियन वाला, गाइस, जूम कैंपेनियन जनरेट समरी एंड गिव इट टू एवरीवन, ये एवरीडे की समरी है पूरी, 2-2 घंटे की रोज की, यस। जूम व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पे, गाइस, व्हाट्सएप 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 पर, व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप 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 Vikas sir, can व्हाट्सएप you पे just समरी। explain that same EMI AI जो आप बता रहे हैं एलएमएस में, एक बार आप वापस एक्सप्लेन करेंगे वो वीडियो में बस आप कहाँ हर से वीडियो मिल? के, देखो हर वीडियो के नीचे एक ये आता है, आस्क मी एनीथिंग, बस यहाँ पे ओके, पूछ लो क्वेश्चंस, ऐसा है। ऑलराइट, यहाँ पे भी क्वेश्चन ठीक। पूछने का ऑप्शन है, ओके, जो आप मेरे को व्हाट्सएप पे पूछते हो ना, वो व्हाट्सएप की जगह इससे पूछो तो ये बेटर आंसर देगा और ये फास्टली देगा, इमीडिएटली देगा, मैं शायद थोड़ी देर स्लो हो जाता हूँ, राइट, व्हाट्सएप ग्रुप में भी हो सकता है थोड़ी देर स्लोनेस हो जाए, ओके गाइस, यस, ओके, सोना ने कुछ जनरेट किया, बेस्ड ऑन द मीटिंग ट्रांसक्रिप्ट, हियर इज द डिटेल लाइनेक्स कमांड्स, ओके, गुड, ये आ गए आज के कमांड्स, ओके। थोड़ा सा ये तो मजा नहीं आया, थोड़ा सा नाम के साथ प्रॉपर करो ना, ये थोड़ा सा और प्रॉपर करो, जनरेट सम मोर प्लीज, जनरेट सम मोर, यस, मीटिंग समरी, लाइनेक्स कर्नल, हाँ, लाइन, ये शुरुआत ऐसी हुई थी हमारी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, यस। हर देखो हर्ष का नाम आ रहा है, देखो गाइस, हर्ष ने जो एक्सप्लेन किया उसके नाम आ रहे हैं, सबके नाम आ रहे हैं, तो इसने क्या डेमोस्ट्रेट किया, ऋषभ ने क्या डेमोस्ट्रेट किया है, सारंग ने क्या डेमोस्ट्रेट किया है, ओके, मशीन सेटअप कैसे थी, एक्स वाई जेड, ओके, कूल, ठीक है, नाइस, ओके, जनरेट जनरेट सम सिनेरियो क्वेश्चंस एज वेल, ओके। अगर आपको लगता है कि हर्ष ने बहुत अच्छा किया, मोहित ने चाहिए, तो हर्ष के कमांड चाहिए, वो हर्ष मोहित खुद भी दे देंगे, ओके, वो भी इंसान है, बट एआई कैन ऑल्सो गिव इट टू यू। सर मैं दे चुका हूँ। दे चुके हो ना, ठीक है, बस, नाइस, ठीक है, नाइस, ओके, गुड, गाइस, हु वांट टू कम द नेक्स्ट, कौन आना चाहेगा नेक्स्ट, हु वांट टू कम द नेक्स्ट? किसी को चला ऑफिस में है तो मैं करूँ? एक बार ऑफिस वालों को अपन ले लेते हैं, ये एक बार अपन फिर से करेंगे, ओके, वन मोर कर लेंगे इसको, लीव नहीं करेंगे, ओके, बिकॉज दिस इज गोइंग इनटू वेरी गुड डायरेक्शंस, ओके। तो हम लोग इसको आज, जैसे अभी 9-10 बज गया है, 10:15 तक आज यूज करते हैं, 2 more people, ओके। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट फ्राइडे अगेन हम लोग एडब्ल्यूएस और लाइनेक्स को मर्ज करके कर देंगे, इज दैट ओके? सर यस, नो? परफेक्ट है सर, ये परफेक्ट है। है ना, क्योंकि देखो हाँ जितना हम पढ़ेंगे उसको मर्ज करना और उसको एक्सप्लोर करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ करेक्ट, सर। ओके। ये मैं मालूम है कब करवाता हूँ, जब मैं 40+ एलपी वाले स्टूडेंट्स को लेता हूँ ना अपने बैच में, ओके, तब ये मैं उनके साथ कराता हूँ, क्योंकि ये देखो, पहले तो यार सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है 30 लाख 20 लाख की जॉब लग जाए, 10 लाख की जॉब लग जाए, करेक्ट, यस और नो, राइट। तो मेरा एक और पार्ट होता है, ओके, जिसमें क्या मैं 40+, 50+ स्टूडेंट्स को लेकर, मतलब एलपीए पर लेके जाता हूँ स्टूडेंट्स को, उनसे खुद ही करवाता हूँ सारी चीजें, पढ़ाने की जगह उनसे खुद करवाता हूँ सारी चीजें, ओके। हम लोग रियल टाइम यूज केसेस रखते हैं इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, और उसके बाद चलो अब आ जाओ इस पे एक्सप्लोर करेंगे, टॉपिक पहले आ जाता है, जैसे हैकेथॉन्स होते हैं कॉलेजेस में, यस और नो, ऑफिसेज में हैकेथॉन्स होते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आता है, गेस व्हाट इज प्रॉब्लम स्टेटमेंट? सर मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ मेरे प्रोजेक्ट में या मेरी टीम में, एग्री, द प्रॉब्लम स्टेटमेंट विल कम, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे पहले एक सेशन होगा रिसर्च पे, ओके, अगला होगा इम्प्लीमेंटेशन पे, 2 सेशन में हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, लाइक ए हैकेथॉन, अंडरस्टूड, ओके, कूल, थैंक यू। पहले तो यार सबसे पहले तो 30-40 एलपी की जॉब उठाना वो मस्त है, इंपॉर्टेंट है, करेक्ट, कुछ स्टूडेंट टेंशन मत लो, ओके, सब पहले तो 20-30 लाख की जॉब मिल जाए, उसके बाद आगे की सोचेंगे, ओके, बिकॉज सी देर इज नो एंड फॉर एनीथिंग, आपको हमेशा आगे बढ़ना है, गाइस, आर यू एग्री, यस और नो?
और डर Yes. के कुछ नहीं होता है। ओके, डर के कुछ नहीं होता है। ओके, कुल। ओके, ले ऑफ से मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज भी आए। कल आपका टॉपिक ही हो रहा था कि सर ओरेकल ने ले ऑफ हो गया। अरे ठीक है, हो गया तो अगली दुनिया मार्केट ओपन है। ओके, जो हो गया उसको कुछ नहीं कर सकते, राइट। 6 मंथ 1 साल की सैलरी भी तो मिली, वो भी तो मजेदार बात है, एक दिन में मिल और गई। बहुत सारी वैकेंसीज और आने वाली हैं, जितने लोग लीव्स कर रहे हैं वो सब हायर करेंगे थोड़े दिनों में। करेक्ट, सब हायर हो ही जाते हैं। ओके, हो ही जाते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, हो ही जाते हैं। ओके, गुड, चलो, गुड, नाइस। ओके, हु वांट टू कम द नेक्स्ट? किसको ऑफिस जाना है वो पर्सन ले लो। शिवा, ऑफिस जाना है Yeah, पक्का? yeah, yeah. I will. ठीक है, ठीक है ना? Yeah. Okay. शिवा, थोड़ा सा And ना 10 मिनट्स में क्लोज करने की कोशिश करना, 5 to 7 मिनट्स में, है ना? sure, sure, sure. Cool. शिवा, यू कैन शेयर स्क्रीन। Yeah, yeah. Able to see my screen? ये ये वाली जो पीपीटी देख के मुझे ऐसा लगता है जो मैं 10 साल पहले बनाता था। आज Yeah, चल, actually, in hurry bari, I was done this because yeah. गुड। क्या टॉपिक, क्या है, क्या बताना चाहते Okay, हो? today my topic is log rotate. So usually we use the log rotate. It's a Linux utility designed management log files, and it's a use cases for this tool is like helping a free up a space, rotating the logs, compress the logs, and deleting. So this is some kind of we can delete the old files. So I will explain you in the real time like. So if in your company if you are facing any issues like a server is filling up very fastly and if your manager asking why it is filling up, so that time this log rotate will be helpful. Why? Because every application will be generate the logs. So on the daily basis, hourly basis, every time it will generate the logs. So that log files will be stored in somewhere in our system, so it will be consuming the memory. So in this scenario, in this situation, we can do the log rotations. So yeah, this is a quite advanced level, but yeah, I will explain you how to do the log rotate in using the line in the Linux system. So this is the files location. So we'll go to the practically first. I will show you how to what is the location of the file. CD. Yeah, this is a log file. So this is a location of the logs file. So if we do the ls-lrt, so it will give the okay, sorry, it will give the detailed report. So here every logs will be get stored. So these are the some kinds of SSD logs, tele logs, and audit logs. Some kind of logs like this it will come. So every log files will be stored in this file location. So now I will show you one. I will install one application like I will install Nginx. Okay, I will install the Nginx application or web server. Sorry. So I will check the. Yeah, it is in the dead state. I will start it Nginx web server. Okay. Now I will check the status of the Nginx server is running. So now I will go to the file location where it is present. Sorry, log file location. Yeah. Now Nginx is reflecting in the log files. So yeah, whatever applications we are installing, so all the log files will be come and store in the CD where and log in this location. So now log rotation will be come into the picture. So I will go to the log rotation. Oh, it is on housekeeping approach or log rotations. Yeah. Okay. This is a log rotation file. Here, here we can give the properties to the log rotation. So ls. So this is the files in the log rotation. It is present. So see here, Nginx is also came here. So what is we'll check the what is the properties of Nginx.
in the log rotation. Yeah. So this is how it will create the log rotation. Before this, I will go to the slide and I will explain you how it will log rotate. So yeah, if in the properties, here we have to give the properties when it has to rotate and how much the space file size after reaching to this much size of the file. So it has to so we have to give the properties. These properties will be depends on your company and your depends on your works. So many properties will become. I listed few on this. So if I give the daily property in the log rotation file, it will daily rotate the log files. So if I give the rotate 7 option or property in that file, so it will keep last 7 days of logs. Sorry, so if it created the file, log rotate created the file, it will give the keep it the 7 days. And compress, if I give the compress property, so it will compress the old logs and it will save. And missing, okay, if file is missing in the location, it will give the missing. If you give the missing okay properties, if any file is missing in that log file, then it will not throw the error. And notify empty properties help for the if any empty files are coming, it will notify it and it will skip that particular the log rotation or compressing. Those are kinds of things it will do. Like this it will go. And here one more is the main thing is size. If you in this log rotation file, if you mention the size, for example, if you mention the size 10 MB, if you mention the size 15 MB, yeah, if that file is reaches to the 15 MB, automatically it will rotate. And old dir especially we give for if if you are working in the prod environment, we require old rotated files. So that time we can give old dir and file path, and it will store the all the old logs files into the dir. So this is how it will helpful. So as I said before, file will be compressed and it will remove the older file. So because of this, there is a lot of spaces will be saved in our day-to-day activities in Linux system. So yeah, so this is we can these things. So I will take one practically one example. So I will go to the my previous log files. Okay. This is the practically anyhow. Whenever you are hosting the application, automatically logs will be get create. So if so automatically if for example, if we are hosting any third party application, so that time we can how we can rotate the file. So I will create a one file here. For example, I will take a ABC file. Okay. One minute. Sorry. Oh, C is in caps, so you should put it C. Yeah. Okay. I will. No, please. I believe you are putting in the wrong application because ABC you have put it in the small, and right now you have put it ABC as Yeah. Actually, caps lock Yeah. is on. So yeah, okay. Now we are into the ABC file. So here I will create a one log file. I will keep name as the same abc.log. So I will keep the log file and I will come out of the directory. And yeah, this is our ABC file is got created. So see here, ABC file is got created. So now assume that this ABC file is a one of your third party application. So in your organization, someone asked to enable the log rotation for this ABC application. So that time we have to go to the file location. Sorry, log rotation file location. So here we have to same thing. We have to create a directory for the ABC application.
So same way I am following ABC and CD. Okay, and I am into same file again. I will create a one log file over here. So okay. Okay, I created the ABC file inside the ABC folder. So now I will edit it by using the VI editor. Okay, so okay, I will copy the command from here. Sorry. Okay. I. Just Insert type I. insert mode I done. Bye. कैंसिल करके फिर से कर लो। Okay. ये आपका आई प्रेस नहीं हुआ है शिवा, यू हैव टू प्रेस आई। सर सर यही मैं बोल रहा था कि ये लाइनक्स में AWS लाइनक्स में ये अनस्टेबल होता है इन VI। वी हैव टू यूज मोवा एक्सट्रम Oh लाइक सॉफ्टवेयर yeah. टू डील विद। यस, और वो Actually, I आप कॉपी नहीं जितनी बार होता इसको है, एंटर करोगे उतनी बार ये नीचे होता चला डिसिप्लिन हो जाएगा और जाता है। डाउन हो जाता है। I okay, I feel the will do same the thing. इसको forceable बंद quit. करो, इसको बंद करो, इसको बंद करो, क्लोज इट। ओके, हाँ Okay. फिर से करो, फिर से ओपन करो। ओके, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे एंटर करो, आई प्रेस करो, आई। Okay. ओके, Insert आई mode. अभी नहीं हुआ। आई Sir, एक बार फिर से आई प्रेस करो, आई आई आई। okay. हाँ ठीक है, अब कंट्रोल सी करके अपना पेस्ट कर दो, कंट्रोल भी करके। Okay. नहीं हुआ, राइट क्लिक माउस से करके देखो, राइट क्लिक माउस से करो। ये इसको है ना हाँ, इसको नोटपैड पे टेक्स्ट पे रखकर फिर पेस्ट करो। Okay. Mouse One more time. move. Oh, sorry. I will try from here only. Something is missing. या यू कैन यूज नैनो आल्सो। एनो कर लो, ये कैट कर लो, कैट करके चलो ठीक है। Okay. One. Yeah. Insert mode. No, sir. It's not working. Something is missing. कभी कभी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। Yeah. रियल कंट्रोल टाइम में में तो रियल करके टाइम लो, इश्यूज यू आने हैव चाहिए। टू ओके, राइट क्लिक पेस्ट। So yeah, I will explain from slide only. So yeah, here we have to give first we have in the vi file we have to give the location of the that file. So here I created the abc, so I will give the abc file, and star.log is whatever logs are present in the abc folder, or for abc is some kind of tool. So it will everything it will grab from over there. And if file size is reaches to 10 MB, then automatically it will take and it will pick up, and it will first it will compress that file. And after 5 rotation, for example, if five files are reached to 5 MB, then after files will be after 5 files creating, it will rotate the old files, so it will delete the old files. So if I will create this will use it for the after five sorry, this is used for the create the new file location. So the older logs will be stored in the by using these properties. Missing, okay, if any files are missing, or then it will not throw the error. And old directory, so I given here as if property as a file. After rotate the sorry, rotate the log files every five iteration, or every time 5 files are created. So these 5 files will be stored in the old directory. This is how we have to give. And yeah, we have to save wq, and we have to run. So this is how. And okay, a real scenario based, like in real time, how it will be used. आई एम फीलिंग लाइक व्हाट इज योर डेजिग्नेशन, आप क्या हो रियल टाइम में? Actually, sir, I am DevOps engineer. अच्छा, डेवऑप्स। तो ये इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? आज No. क्लाइंट्स की क्लास में इसलिए, राइट? Yeah. है ना, बाकी ये सब तो हमारे पास प्योर ऑटोमेटेड हो गई है। करेक्ट, ये सब आप करते हो क्या रियल टाइम में? Yes, actually, sometimes because what happens in our organization, we want to keep that files more, like if रोटेटिंग। you want to okay, हमको logs ज्यादा चाहिए, तो we can increase those things. So that time I used these things. Yeah, log ओके ठीक है, rotation. ओके Yeah. ठीक है। बाकी जब से डॉकर कुबरनेटिस आ गया, मॉनिटरिंग सिस्टम, मॉनिटरिंग टूल्स आ गए, नहीं चाहिए, नहीं करनी इतनी मेहनत। करेक्ट, Yeah, yeah. गो अहेड, कंटिन्यू।
Okay. Yeah. Yeah, okay. Actually, in 2 to 3 years back, one interview, they asked me how you will do log rotation and what is the Correct, file correct. for that. So yeah, so because of that, I thought this is one we can do it. So yeah, Perfect. that's it. Guys, see, guys, one thing, I want to stop. शिवा आराम से कोई जल्दी नहीं है. Okay, Yeah. guys, I want you. Okay, everyone, जो आप सुन रहे हो ये सारी चीजें. Okay, आप अपने इंटरव्यू जो शिवा ने बोला कि 3 साल पहले मैंने ऐसा किया, आप ऐसा बोल सकते हो कि 3 years back when one of the servers I get a requirement from the client, I did this all activities, log rotation. करेक्ट. आपके पास रियल टाइम में बोलने के लिए एक एक्टिविटी बन गई. अंडरस्टूड? यस और नो? अरे यस नो. So, ओके. यस यस शिवा, सर कंटिन्यू. सर बट सर बट ये लॉजिक वर्क कैसे कर रहा है सर, ये थोड़ा एक बार एक्सप्लेन कर देते सर, समझ में नहीं आया मैं हमको। एक्सप्लेन करता हूँ. आई विल एक्सप्लेन ना, मैं एक्सप्लेन करता हूँ. जो शिवाय जो फाइल खोल के ओपन करके बैठा है ना, वो उसमें लॉजिक लिखा हुआ है. Yeah, उसमें logic right, लिखा है. And I will right. give the config file, these commands in the chat box. So in this command, log rotate config command, you will get the like rules, how log rotate will be work. It will give the rules and in this log config. And here you can give the properties of the log rotate. If you read these two files, you can understand how it is working and what is that properties. Yeah, because that's it from my side. Nothing. शिवा, वेरी गुड. ओके शिवा, आपके जो भी कमांड्स है, एवरीवन नीड इट, तो प्लीज शेयर इट, है ना. Sure. इट विल बी हेल्पफुल फॉर अदर्स. ओके. और शिवा, वो वाली फाइल एक बार ओपन करो, जिसके अंदर वो काउंट और वो सब लिखा हुआ है. बिकॉज लेट मी एक्सप्लेन. Sorry, history. आपका Okay, पीपीटी, okay, यूर पीपीटी, यूर पीपीटी. okay, okay, okay. करेक्ट. इसके बाद वाला, इसके बाद वाली. ओके. हाँ, इसके बाद वाली स्लाइड. करेक्ट. स्लाइड नंबर 4, स्लाइड नंबर 4, फोर्थ स्लाइड. Okay, so हाँ शिवा, यहाँ पे इसको एक बार स्लोली आराम से एक बार फिर से बताओ, बिकॉज दिस इज द मेन लॉजिक. ओके. yeah. So whenever we want to rotate any file or any log files, so that time we have to do the VI. Once if we enter into the VI mode, then we have to mention the file location. For example, where all the files will be stored in the same location. So whatever application you can mention that application. And star.log in the sense whatever log files are generating in the ABC or in any application, so it will store into the it will give. And next these are the properties we have to give these kind like this of kind of properties we have to give. So yeah, if size property, what it will do, if you mention the size, if size is reaches to, if for example dot log, whatever files are present in the log folder, so if file is reaches to 10 MB, then automatically it will start rotating it. So it will automatically start rotate. How it will rotate? Next iteration, what I was given, compress. So here it will whatever file if file is reached to 10 MB, then it will compress and it will store into the old directory. It will store into the old directory. So before that, I given a properties like rotate 5. So every 5 rotations, every 5 size generated. For example, today one file is reached to 10 MB. One file is got created. It will saved in the old directory. So like this every 5 iterations. So sometimes what happen, why we give rotate 5 rotates. So if you want any older logs, we want to read any older logs for the debugging purpose or troubleshooting purpose. So that time we will fetch the logs from the old directory. So this is how we keep. So many companies will not keep this. If it is pre-prod and dev environment, we will not keep this. And create, next I given a create property here. Why create is in the sense whatever files is compressed and created, it will create the file inside the old directory and it will store it. And missing, okay, for example, if that file is not present in the ABC folder, and if the logs is not generated, for example, if system is shut down for 2 days, it is not generated any files. So missing okay is if any files is missing, it will not throw error and it will not show anything to us. So for this I given a missing okay property. And as I said before, old directory, so whatever compressed file will be stored in the old directory, we have to give the file path. For example, we have to create one file and we have to give that same file path here. So every compressed file will be stored in here. So yeah, in this scenario, how file will be get deleted.
So after every five rotation, every five file created, sixth file will be get delete from the old directory. So this is how we can save the space here. थैंक यू शिवा, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ओके गाइस, एक सिंपल सी बात आई विल से। ओके, इतना ज्यादा रिमेम्बर करने की जरूरत नहीं है शिवा, वेरी गुड। ओके, बट एज ए इंटरव्यू पर्सपेक्टिव यूज केस यू कैन से वन ऑफ माय सीनियर शिवा वाज देयर, ही सेट अप ऑल दिस थिंग्स। ओके, और आपके इसको लॉजिक्स पता होना चाहिए एटलीस्ट। अंडरस्टूड, यस और नो? ओके, है ना? Yes, और यू वर्क yes. विद द शिवा। ओके, शिवा तो हर कंपनी में मिलेगा, हर टीम के अंदर शिवा मिलता है। ओके, बैंगलोर की हर टीम में शिवा है। मेरी टीम में भी एक था, बहुत सारे शिवा है। ओके, बिल्कुल जेन्युइन नेम है, नो वरीज। ओके, यू कैन से इन माय टीम आई वर्क विद द शिवा एंड ही सेट अप ऑल दिस थिंग्स। ओके, और ऐसा एक एक्सपीरियंस लेवल पे होता है, नॉट फॉर फ्रेशर लेवल। आपको ये सब नहीं करने की जरूरत है। ओके, बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस, अब हम लोग ये सारी प्रॉब्लम्स आती थी। ओके, दिस ऑल प्रॉब्लम्स, लॉग रोटेशन, लॉग मैनुअली मूव करना। ओके, दिस ऑल प्रॉब्लम शुड नॉट कम। ओके, उसी के लिए हमारे पास डॉकर, कुबरनेटिस एनवायरनमेंट आए, मॉनिटरिंग सिस्टम्स आए, लॉग्स। सी यहाँ पे क्या होता था, व्हाई वी आर डूइंग। एक बंदा, नितेश भाई आपने अभी बोला ना कि एक ने पूछा था क्यों करते हैं ये चीज। नितेश, आपने जो आंसर दिया वो फिर से बोलो जरा, व्हाई वी हैव टू डू दिस थिंग। Like if we don't do it, then the space will get accumulated. So करेक्ट, in अगर order हम to ये नहीं save the करेंगे तो space, हमारे, इफ यू विल नॉट डू इट, हमारे वीएम का स्पेस फुल हो जाएगा। करेक्ट। ओके, yes. मैं बोलूंगा इन सब लॉक्स को मूव कर दो स्प्लम के ऊपर। और सर फिर ये राइट, ऑटोमेशन से फिर S3 में भी चला जाता होगा, S3 बकेट में भी हो जाता S3 में कर दो, ठीक है, या स्प्लम के ऊपर मूव कर दो, या किसी मॉनिटरिंग के ऊपर सेंट्रलाइज लोकेशन पे ले जाओ। सर यही तो राइट, यस और नो? ईएल के स्टैक में यही तो होता है। हाँ, ये ELK में ले जाओ, कहीं पे भी ले जाओ। ओके, यू डोंट, मतलब आपको आपके वीएम पर ही इतना टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि आज के टाइम में 100 वीएम से 100 वीएम्स में ऐसा सेटअप कर ही नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। सर राइट, S3, अगर ये काम तो सर हम S3 में भी कर सकते हैं ना। अगर यूजलेस फाइल है तो हम थोड़े दिनों के बाद में हम इसको दूसरे में भी लूप कर सकते हैं, बिल्कुल स्टैंडर्ड से हम बिल्कुल उसको बिल्कुल इंटेलिजेंस में बिल्कुल बिल्कुल सब आज मतलब अभी देखो क्या होता है, एजेंट्स इंस्टॉल होते हैं वीएम के अंदर, जैसे जैबिक्स एजेंट हो गया है। ओके, या क्या कहते हैं, कुछ हमें प्रोमेथियस ग्राफाना में नोड एक्सपोर्टर्स होते हैं, वो ये सब काम करते रहते हैं, उनका काम ही यही है। ओके, द डेमन्स विल रन इनटू द बैकएंड एंड ही विल परफॉर्म दैट एक्टिविटी। ओके, वेरी गुड नितेश भाई, बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक्स अलॉट। है ना, नितेश ने अपनी सारी चीजें भी दे दी हैं चैट के अंदर। सर इसका यूज केस मुझे लगता है एक ही जगह है, जब आप अपना सेंट्रलाइज्ड सिस्टम बना रहे हो, आप कहीं क्लाउड पे नहीं हो, आप खुद का ही सर्वर तब बना रहे तब हो, आपको ये सब करना है। तब करना ओके, ये पड़ेगा आपको इसका। सिर्फ वीएम के अंदर ही रहना है, या आपके पास हाँ 5 या 10 वीएम ही है। नितेश, आप शिवा, आपके कंपनी में हाउ मेनी वीएम्स आर देयर? Sorry. हाउ मेनी वीएम्स जिस पे आपने ये सब काम किया है? Oh, actually, yeah, it's more than actually, it's more than 100 plus VMs are there in my old उसमें मैनुअली organization. ये सब चीजें सेटअप करी हैं? No, no, actually, manually we are not set up this. कैसे Yeah. करी, कैसे करी, वही तो क्वेश्चन है। Oh, yeah, I'm not sure about it. Yes, but अरे yeah, यार, actually, इतना अच्छा बताया, आपको तो बताना पड़ेगा, आंसर तो आपको भी no, देना no, पड़ेगा। yeah, yeah, that's to real time में नहीं किया हूँ मैं ये सभी एक्चुअली इंटरव्यू में क्वेश्चन आया था, so because of that, and one time I तो was done in the सी real time. गाइस, अब एक और, अरे गाइस एक और मजेदार बात, रियल टाइम में नहीं किया, इंटरव्यू में आया तो इसलिए हमने पढ़ा बस, है ना? गुड, Yeah, चलो ये इंटरव्यू भी में आए अच्छी तो बात है। इसलिए ओके, पढ़ा था सर, and one time I was done in my organization, so yeah, it's consuming more memory. So yeah, interview, if you interviewer ask system is going again and again down, what is your actions you will take care. So many people will say we'll restart the VM, we'll check the PS. Yeah, हाँ, उसकी जगह ये आंसर बोलो, ये उसकी जगह उसकी ये जगह आंसर ये आंसर बोलो। दिए ओके, तो थोड़ा बेटर तो बेटर बेटर हो सकता है। करेक्ट, तो मालूम है, बेटर पैकेज मांगने की तुम्हारी कैपेसिटी इंक्रीज होगी। So real करेक्ट, के हाँ, sorry अगर sorry रिस्टार्ट sorry बोलोगे for तो cutting. 10 लाख का 5 लाख का पैकेज मिलेगा। ओके, और अगर ये बोला और फिर बाद में बोला कि फिर उसके बाद रिस्टार्ट किया तो 25-30 लाख का पैकेज मिलेगा। करेक्ट शिवा? Yeah. थैंक यू, थैंक्स अ This लॉट। will clear our concept actually. What Shiva had explained, that was really very good. And manually, just for example, मैं बता रहा हूँ कि because I'm new to this particular IT industry, and this type of administrative. So जैसे हम मैनुअल गाड़ी हम चलाते हैं, उसमें हमको सारी डिटेल्स मिलती है, लाइक फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट ट्राइंग टू, कि उसमें गेयर बदलने जाते इमरान, हैं तो वो कैमरे पे आ सारी जाओ, चीजें। कैमरे पे आ जाओ, कैमरे पे आ जाओ, अच्छी बात कर राइट, रहे हो। राइट। सो I'm just trying to सर, मैं एक मिनट में कैमरा पे ही आ रहा हूँ। राइट, एक्चुअली कुछ कैमरे का थोड़ा सा मेरा कोई बात पहले नहीं, से बोलते हैं इशू चल बोलते रहा हैं बोलते हैं बोलते हैं है। बोलते राइट, हैं बोलते हैं। सो हाँ जी।
हाँ जी। सो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू कोऑर्डिनेट कि किस तरह से हम जो है जैसे जैसे शिवा ने एक्सप्लेन किया। सो जब तक हम ये मैनुअल चीजें हम समझेंगे नहीं, हमको कैसे समझ में आएगा आगे की चीजें। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हाट आई अंडरस्टैंड। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, मैं रिलेट कर रहा था, जैसे कि हम मैनुअल कार हम चलाने को सीखते हैं फॉर अ स्टार्टअप, एज अ स्टार्टअप। जब हम मैनुअल सीख लेते हैं, ओनली देन विल कम टू नो कि गियर किस तरह से बदले जाते हैं, ऑपरेशंस कैसे होते हैं, मैकेनिज्म किस तरह से वर्क करता है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, लॉजिक्स हमारे क्लियर होते हैं। और फिर जब हम ऑटोमेशन पे जाते हैं, जैसे हम कुबरनेट और इस पे जाएंगे, उसमें तो ऑटोमेशन है ही है, उसमें तो हमको कुछ करना ही नहीं है। और जब एआई आ गया है, तो एआई विल डू एवरीथिंग, वी जस्ट हैव टू इम्प्लीमेंट दैट। So what my understanding is, whatever Shiva has done it, that is actually very important to know, to clear a concept and to लगता है get the उनको logic पता होना behind that. चाहिए, सी पता होना Right, चाहिए, वी हैव टू बी अवेयर अबाउट इट। इसलिए तो मैं right. अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ कि भाई आपकी कंपनीज में, आपकी चीजों में क्या हुआ है आपके साथ, क्योंकि कुछ 5-5 10-10 साल एक्सपीरियंस वाले हैं, तो भाई कुछ तो अच्छा किया होगा ना, करेक्ट? या आपको 40 LP पैकेज मांगना है तो भाई किस बेसिस पे मांगोगे, ये बेस है, करेक्ट? तो अब सर जैसे मैं बता आफ्टर रहा था कि जिस तरह से पहले जो जिस तरह से ट्रेडिशनली सारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किए जाते थे ऑफिस में, वो सारी चीजें थी। हाँ, ट्रेडिशनली थी। तभी तो हम वहां पे आईटी टीम थी, L1 टीम थी, L2 टीम थी, मैनेजमेंट टीम थी, वो सारी टीम्स थी। और उस तरीके से वो ट्रेडिशनली चीजें चलती थी। बट नाउ एवरीथिंग इज ऑन क्लाउड। सो जब तक हमारा वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है कि किस तरह से सेटअप होता था, रैक सर्वर कैसे किए जाते थे, उनको सर्वर फ्रेंड्स, कैसे इस हम बात में लोड मेरे को करते। क्या याद आ रहा है मालूम है? कुछ स्टूडेंट जो AWS डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं, उनकी क्या हालत होती है, उनको क्या मजा आता होगा, जो लोग कुबरनेटिस से अपनी लाइफ स्टार्ट कर देते हैं, राइट? राइट, राइट, उनको तो पता ही एक्चुअली, नहीं है, उनको सिर्फ नाम की डेफिनेशन कुबरनेटिस की पता है, कुबरनेटिस के 5 फीचर पता है, आपको रिज्यूम में लिख के इंटरव्यू देने राइट, चले गए, करेक्ट? राइट। सो और अभी इंटरव्यू मैं में जितनी 10, जल्दी, हाँ, राइट, 5 दिन में पढ़ के इंटरव्यू देने चले गए थे वो, 5 मिनट बाद वापस भी आ गए, मैंने बहुत, तो अब नहीं हो राइट। पा कर। जैसे हमें 10 साल ऑलरेडी टीएससीज में था, और वो वही पुराना वाला इंफ्रास्ट्रक्चर था, उस तरीके से हम लोग चलते थे। और उसका जो सीएमएस एक चाइल्ड कंपनी थी, उसमें उसमें चीजें वैसी होती थी। हमको एक इंसिडेंट गिरा, वो इंसिडेंट में हम गए, लैपटॉप लेके अपना पोर्ट पे सारी चीजें डाली, स्विच देखे, राउटर्स पे चेक किया, और अगर आ गई चीज, हाँ चलो पिंग करके हमने देखा यहाँ पे इमरान ये तो स्पेसिफिक सीरियस पॉइंट हो पे गए, इशू इमरान है। अपनी पुरानी पूरी सारी चीजें याद आ गई, हाँ, No, ठीक है, no, देखो no, sir. I'm डिटेल just, नहीं बोल I'm just रहा, खोल ले। relating. Sir, I'm just कर, हाँ, relating and trying कोरिलेट to, हो रहा है, राइट? यस और नो? सारी चीजें। तो अब ये चीजें ऐसी हो गई कि there are so many commands, there are so many, automations are there. Until and unless you'll understand वो चीजें, I mean, तभी I'm तो relating सी अगर everything. Shiva, सी I'm अगर relating. ये आपको सी अगर आपको ये सब चीजें नहीं आएगी तो आपको ऑटोमेशन बहुत टफ लगेगा, करेक्ट? Correct, दैट्स इट, correct, है ना? अभी absolutely जैसे correct, मोहित ने वो माउंटिंग दिखाई थी अपन ने ईबीएस के अंदर, 1 सेकंड में क्लाउड में तो हमने absolutely कनेक्ट correct. करा और अंदर दिख गई, दैट्स इट। एक जने ने Right. ऑटो स्केलिंग दिखाई, राइट? दैट इज ऑल्सो रियली वेरी गुड, वही मैं कुबरनेटिस में सिखाऊंगा, ठीक है? शिवा जो कर रहा है वो मैं मॉनिटरिंग क्लासेस में सिखाऊंगा, तो ये सारी चीजें आपको आगे जाके दिखेंगी, ओके? Right. दैट्स इट, कूल गाइस। हाउ वाज द टुडेस सेशन, कैसा लगा? Absolutely. was Very, अच्छा था nice. very सर, बहुत अच्छा। informative, very, No very, issues very from good. your And Shiva really, वेरी गुड, वेरी गुड, very good. अमेजिंग। थैंक यू एवरीवन सर। राइट, ऑल गुड? ओके, फैंटास्टिक। आई सर एम आई हैव स्टॉपिंग द क्वेश्चन। रिकॉर्डिंग। 2 मिनट, एक मैं क्वेश्चन यूट्यूब था। की रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, ओके? बहुत लंबी हो गई है, सर एक ओके, क्वेश्चन है था। ना? सारंग, 2 मिनट में, है ना, मैं यूट्यूब की रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, उसके बाद अपन ये सारे डिस्कशंस करते हैं, देन आई विल ओपन द Q&A ऑल्सो, ओके? ओके सर। Guys, just now we have seen that how the student has been learned, okay? क्या क्या उन्होंने चीजें करी है, okay? Guys, I am stopping the recording of YouTube, okay? और उसके बाद I want you to generate the summary from the AI. Please ये सारी summary AI से generate करो, okay? And put it जहाँ पे भी आपको put करना है, WhatsApp ग्रुप में put कर दो, YouTube पे कमेंट पे करना है, you can put it, so that ये सारी चीजें देखो, कोई 3 घंटे का वीडियो नहीं देखता है, रियल में नहीं देखता है, आर यू एग्री? बहुत सारे लोग नहीं देखेंगे, वो सिर्फ ये पढ़ लेंगे, तो भी उनको तब जाके वीडियो देखेंगे, तब उनको रियलाइज हो कि अच्छा है, मेरे को पढ़ना भी है, सब चीजें करना भी है, राइट? दैट्स इट। चलो, आई एम स्टॉपिंग द यूट्यूब रिकॉर्डिंग, ओके?